साइन है। नो डीएनए और एफएसएल वर्क्स। Where she was confronted with her previous statement, paragraph. Victim is PW. Yes. Yes. You are reading para 7. Kindly read it again. इसमें क्या है कि इन्होंने जजमेंट दिया था। जी जी जजमेंट में 2 पार्ट्स हैं। अगर दुर्घटना
उस कट ऑफ डेट में जब उसको 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया, That is the maximum limit. उसके पहले की है तो 4 लाख प्लस ब्याज या 8 लाख जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। Sir, अगर एक सेकंड बात सुन लीजिए, जो जजमेंट दिया था मैं तो जजमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर it is on Reena Devi Anushya. हाँ रीना देवी, यस, और 8 लाख अगर कट ऑफ डेट के बाद का है तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन से ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपका एक्सीडेंट जो है वो कट ऑफ डेट के पहले का है, यही बात आई है ना इसमें? नहीं सर, घटना तो 4/1/2018 की और अमेंडमेंट 16 में आ गया है, 4 लाख से 8 लाख। 4/1/18 की है। हाँ 4/1/18 एक सेकंड देखिए, Actually, Sir, order पे- judgment date of accident is not ओरिजिनल ऑर्डर mentioned. में, ओरिजिनल ऑर्डर में जितने की एक सेकंड Record. नहीं, 4/1/2018 मैं ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग आई हैड नॉट ग्रांटेड यू इंटरेस्ट। 4/1/2018 Sharik 2018 है, so that was after the notification. आफ्टर नोट फिर तो लिखिएगा रिव्यू में हर्ड ऑन आइए इतना एन एप्लीकेशन सीकिंग रिव्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 14th जुलाई 22। जी नहीं भाई, 23rd of 23rd June. 23rd of June June 22. 22। There is delay of 46 days also. हाँ, I is there. delay of 46 days in filing the review is condoned for the reasons stated in the application. Next paragraph. It is submitted that claimants are entitled to interest on this amount of rupees 8 lakhs from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. This could not be disputed by Shri Harshvardhan Singh Rajput in the light of the Supreme Court judgment in Reena Devi. पूरा citation लिख के दे दीजिएगा Reena Devi. Next paragraph. In view of such facts, it is directed that claimants will be entitled to 6% interest on the awarded amount from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Okay. Serial number 17. Issue notice आइए पे कर दीजिएगा कॉल फॉर रिकॉर्ड 17-18 में। Serial number 19. ये बताइए डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन का साल में जी। हाँ, क्या लॉ है इस बारे में? कब लगाई थी आपने आवेदन? पहला आवेदन दिया मगर 26/4/2022। हाँ, आपकी नियुक्ति कब की है? अपॉइंटमेंट माइलॉर्ड 17/5/88। का है। लॉ क्या है? बैक एंड पर हो सकता है करियर के करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। क्या कर रहे थे अभी तक? माइलॉर्ड डिपार्टमेंट ने इंटरफेरेंस किया और तो डिपार्टमेंट के एंटरटेन के बर्थ सर्टिफिकेट कब बना है ये आपका? तो क्या सुधार चाहते हैं आप? बताइए तो थोड़ा सा। 1 साल पहले इसमें सर्विस बुक में हाँ, गैस का 61 है और आधार कार्ड आपका जो है बात का बना हुआ है। आधार कार्ड भी और बर्थ सर्टिफिकेट भी बात का बना सर। बर्थ सर्टिफिकेट भी 2006 का बना हुआ है। नहीं 2022 का बना है। पेज नंबर इसके आधार पे कैसे हो जाएगा? खारिज करें इसको? जजमेंट है, विड्रॉ कर लेंगे। लिखिए भैया राजा भैया भैया राजा वहाँ के राजा भैया तिवारी prays for withdrawal of the writ petition as he admits that at the fag end of the career such request for a correction of date of birth is not admissible in terms of the law. Petition is dismissed as withdrawn. Serial number 20. Shri Sushil Kumar Soni. This is a matter of the regularization of the petition. When were you appointed? I was appointed on 7/9/2022 the master rule 7/9/22. 22 12 12. जी
क्या प्रावधान है? आपसे किस जूनियर को रेगुलराइज किया गया? There's no regularization, but my lord, the Petitioner's only grievance is that petitioner is working on muster roll in the respondent municipal Corporation Satna. corporation Satna since 7/9/2012. Full stop. This case for regularization is not considered by the authorities, though regular vacant posts are available in the setup. Next para. Without commenting on the merits, if a representation is made 15 दिन 60 दिन to speaking order, this court has not expressed any opinion on the merits of the case. Serial number 21 is Sushil Kumar Misra. My lord, in the light of another T2, page 15, petitioner submitted online application for स्वैच्छिक स्थानांतरण. स्वैच्छिक स्थानांतरण. Yes, another T3, sir, my lord. But due to incorrect designation mentioned by the department, this application has been not accepted in the server by the online. Petitioner's only grievance is that petitioner who is working as assistant teacher within bracket science at Government Higher Secondary School MLB Jabalpur had filed an application for transfer. कहाँ जाना था आपको? ये MLB जाना था my lord. अभी जो ये वर्किंग है रांझी में. अच्छा, क्या is working in रांझी के स्कूल का नाम बताइए. गणेशगंज. है? गणेशगंज. Government High Secondary School. Government Higher Secondary School Ganeshgadi Ranchi sought transfer to Government Higher Secondary School MLB Jabalpur, but his request for transfer could not be processed as department had fed incorrect data on the portal. Full stop. Submits that on the basis of corrected data, his request to be considered by the authorities. This innocuous prayer is not opposed. By 15 दिन district education officer, the respond number 2 for representation देंगे, will consider within 60 days through a speaking order. This court has not expressed any opinion on the matter. Serial number 22, Sri Manoj Swaha. By Lordship, we are challenging the order dated 24th June 22. Kindly say Annexer P16, page number 62. The respondent authority, though the service of petitioner has been treated as SAS, but the financial benefit has not been given for the post of SAS during the suspension period from 18 June 2008 to 10 October 2012. उसका रेगुलराइजेशन होता है FR 56 में दिया हुआ है कि कैसे रेगुलराइज किया जाएगा. क्या उसका रेगुलराइजेशन नहीं, वो page number 63 my lord. Representation has been regulated as on the basis of no work no pay my lord. ठीक है. Issue notice petitioner is ऐसा लिखिए. Petitioner is challenging order dated 24/6/2022 passed by Commissioner Treasury and Accounts, whereby period of suspension of the petitioner from कब से कब तक का है? 16/6/8 से 16/6/2008 to 23/9/12. 23/9/12 as no work no pay, whereas according to the petitioner it is contrary to the rules and regulations. Stop. Issue notice or let reply be filed within 4 weeks. Notice is waived by Shri Manas Mani Verma. This in the week commencing 13 मार्च 2023. मैडम का शुभ नाम डाल दीजिएगा. आपका शुभ नाम क्या है? अरुणिमा श्रीवास्तव. मिस अरुणिमा श्रीवास्तव. Serial number 23,
Lord, the petitioner was Lord transferred from Lord the Hoshangabad to Balaghat. He joined Balaghat, but Lord the portal has not choose the online Lord the relieving. Therefore, the concerning coordination principal directed to rejoin Lord the at Hoshangabad. So therefore, he revert to the Hoshangabad, Lord. Then, Lord, the district education officer called for the Lord the updating the data on portal. But till then, today's SIM has not been updated. Ultimately, he has not been Lord the relief from the Hoshangabad to Balaghat. The petitioner's grievances. That petitioner was transferred from GPS. क्या लिखते हैं पढ़ने भी तो आना चाहिए ये P1 में क्या है शाला का नाम Lord the government GPS कुशलाल क्या है कुसुम कोई जी होशंगाबाद to GMS बेलगांव बेलाघाट जी बालाघाट full stop. He was relieved and had submitted his joining at Balaghat. But since his relieving was not updated on the portal, authorities at Balaghat refused to accept his joining. He was relieved for joining at Hoshangabad. Full stop. Petitioner approached authorities at Hoshangabad, but when he was relieved of his charge from Hoshangabad on 20-10-2022 and was directed to give his joining at Balaghat, but while 21-10-2022 District Education Officer Balaghat relieved him to the Milord posted at Milord the Belgaon. But the coordination center Milord the Belgaon has joined at Belgaon, but coordinator at Belgaon has refused to accept his joining. Therefore, petitioner is in Lurch, LURCH. Full stop. State Council is directed to seek instructions that why petitioner relieving is not updated on the portal and why he is not being allowed to join. Representative is pending. Decide 15 days. करते हैं तो हो जाएगा हमारा. 2 weeks में decide कर दो. Belgaon. Full stop. This grievance is highlighted in the representation contained in annexure P7. Full stop. Thus, it is directed that petitioner shall approach the Commissioner Public Instructions within 7 days from today with his representation and the copy of the order being passed today, and the Commissioner Public Instructions shall resolve the issue within further period of 7 days through a speaking order and direction to the concerned authority. In above terms, petition is disposed of. Serial number 24, Rajesh Kumar Tiwari, Vinod Kumar Lapet. My lord, I'm not challenging any specific order. My lord, ये हमारा 1991 में डेली वेजेस पे हमारा ये हुआ था और 2013 में हमको परमानेंट कर दिया गया और 2021 में हम रिटायर भी हो गए। My lord, लेकिन हमने डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन पेश की हमारे कि हमको जो पेंशन बेनिफिट्स हैं और ग्रेजुटी और अदर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इसमें मतलब एक छोटी सी हमसे भूल हो गई है कि हमने जो पेंशन वाला रिप्रेजेंटेशन था वो मिस हो गया है इसमें। कोई बात नहीं, आप तो ये बता दीजिए जी। आप डेली वेज में क्या वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में थे क्या? P1 पेज 12 में हमारा परमानेंट चाहिए।
बताइए किस नियम में मिलेगा आपको? क्योंकि आप अगर वर्क चार्ज में थे तो वर्क चार्ज का जुड़ जाएगा, और वर्क चार्ज में नहीं थे, सिर्फ डेली वेजर थे, मास्टर रोल पर थे, तो नहीं जुड़ेगी वो। लॉ ये है, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। इस पे मुझे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी मालूम, क्योंकि इसका आपका शुभ नाम बताइए। इंद्र कुमार पटेल मालूम है। इंद्र कुमार पटेल। Indra Kumar Patel seeks time to seek instructions as to whether petitioner whose services have been regularized by the department was working as a daily wager on contract basis or muster roll, or was appointed in the work charge establishment. Full stop. On his request, 2 weeks time is granted to do the needful list in the week commencing 30 January 2023. हाँ मालूम, उसका भी रिक्वेस्ट था, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन मिस हो गया, अटैच कर ले आइएगा, मना थोड़ा कर रहे हैं। जी मालूम। राजा भैया तिवारी। My lord, the grievance of the petitioner was the respondent. Number 2, my lord, issued advertisement. Advertisement for the post of selection, group 2 and group 4, my. Group 2, group 4 क्या? ये पेज नंबर 14 पर मेंशन किया है। समूह 2 उप समूह 4 पोस्ट के नाम दिए हुए। अर्लियर my lord, जो पटवारी है, पटवारी पोस्ट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 4 में, but in the present advertisement he is included with the group 2 my lord. On the basis of said my lord, the syllabus of the patwari is changed my lord, because the in group 2 and तो परीक्षा भी आप लिखेंगे, सिलेबस भी आप डिसाइड करेंगे। वकील साहब हैं आपके पिटीशनर, इसलिए ज्यादा होशियार है। देखिए ना, दिनेश सिंह चौहान एडवोकेट। मतलब ये तो नई चीज बताइए कि परीक्षा भी हम अपनी मर्जी के सिलेबस पर लिखेंगे। और पहले माय लॉर्ड, अरे पहले नहीं तो भाई, आपको तो पहले बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इलीगल है, आर्बिट्रेरी है। इन्होंने कोई गजट में अमेंडमेंट नहीं किया। गजट क्या, गजेटेड रूल से गवर्न होता है क्या ये पटवारी का? तो इनको अथॉरिटी दी जाती है। तो इनको अथॉरिटी है, इनकी पटवारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है माय लॉर्ड, पर इन्होंने एजेंसी बना दी है सिलेक्शन स्टाफ। ठीक है, तो उसके लिए कर सकते हैं, एजेंसी बना सकते हैं। अब आप जो सिलेबस है उस सिलेबस से अपियर हुई है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको क्या सुविधा हो रही है? क्या वकील साहब है, हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। पहले माय लॉर्ड 100 नंबर का पेपर था, इसके साथ इनने कर दिया तो 200 नंबर का पेपर हो। 200 में से नंबर मिलेंगे, मेरिट 200 में से बनेगी। कुछ है नहीं, आज आपका दिन सही नहीं है। परमिट विड्रॉ। हाँ बिल्कुल। Shri Raja Bhaiya Tiwari, after arguing for some time and unable to demonstrate that petitioner as a prospective candidate to the recruitment to the post of Patwari is entitled to lay down the syllabus and the terms and conditions of the syllabus selection, please for withdrawal of the petition, same is dismissed as withdrawn. Serial number 26. My lord, kindly permitted to withdraw this petition. My lord, with liberty to file case. क्या हो गया? फाइनल ऑर्डर आ गया है। आ गया है, लिखिएगा। श्री हरीश चंद्र प्रदीप द्विवेदी Pradeep Kumar Dwivedi, learned counsel for the petitioner, submits that during the pendency of this writ petition, disciplinary authority has passed final order. Therefore, he be allowed to withdraw this petition with liberty to challenge final order by filing a fresh petition. Full stop. This request appears to be just and correct. Accordingly, it is granted. Petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Serial number 27. Sri Sanjeev Costa, Sri JM Sir.
The petitioner has challenged his suspension order. He was put under suspension by the order dated 20/7/2021 lordship. 20/7/2021 पेज नंबर ये P1 पेज नंबर 18 पे है लॉर्डशिप। अच्छा 24/8 को हमारे ये ऑर्डर पास हुआ लॉर्डशिप। 20/7/21 को ऑर्डर जो P11 है पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 पे सर। 20/7/21 Again, this order, lordship, I have submitted my representation, and that representation was not decided within time. Therefore, I have come before this honorable court, and this honorable court directed the department to decide the मैंने representation. प्रोविजन देखा रूल 9 में क्या प्रोविजन है? जी। आपको रिश्वत लेते हुए इतना महत्वपूर्ण शासन का काम करते हुए पकड़ा गया है। क्रिमिनल केस की पेंडेंस में दीजिए रूल 9 दीजिए सीसीए रूल्स का। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए रूल 9 पढ़ते हैं। रूल 9 में there are two contingencies provided dealing with suspension. The appointing authority or any authority to which it is subordinate, or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the governor or by general or special order to place a government servant under suspension where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation होना चाहिए, investigation, inquiry or trial, provided that a government servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after sanction of prosecution by the governor against him. So deemed placement of suspension भी है आपका, और जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग खत्म होगी तभी होगा। सर इसमें हमारा जो डिपार्टमेंटल चार्जशीट तो फाइल कर दिया, मैंने पेश किया लॉर्डशिप, तो उससे कुछ नहीं होगा। Departmental proceedings are different. Your suspension is not in contemplation of departmental inquiry. Your suspension is on account of you being caught accepting bribe of ₹3 lakhs. लॉर्डशिप मैंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर्स लगाए लॉर्डशिप, जिसमें पर्टिकुलरली लॉर्डशिप अगर ये पेज नंबर 51 पे देखें, जो ये 51 पे पढ़िए ये सर पेज नंबर 50 पे जी। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त का ये सर और लेटर है लॉर्डशिप, ये तो किसी प्रबंध संचालक का है। इसमें आई डोंट नो उनके क्या रूल्स हैं। इसमें सर लास्ट का दिखाइए, लास्ट पैरा में देखें लॉर्डशिप जी। ट्रैप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी कर्मचारी को संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने के 3 दिवस कार्य दिवस के समय अवधि के भीतर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुए ट्रैप अथवा छापे की कार्रवाई हुई है उसे अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया जाए। अनुसार कृपा आवश्यक कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करना। तो इसमें सर लॉ में नॉर्मली इसमें लॉर्डशिप सेम पोस्ट पे अदर जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है लॉर्डशिप, और ये मैंने 4-5 सर्कुलर लगाए हैं लॉर्डशिप इसी संबंध में है। देख लिया मैंने। ट्रांसफर इज वन ऑफ द रेमेडीज, बट वंस यू हैव बीन प्लेस्ड, प्लीज आई एम ओपन टू दिस थिंग, आई हैव नॉट क्लोज्ड माय माइंड। जी सर, आई सिंपली वांट टू अंडरस्टैंड, जब आप रूल 9 में 2 इवेंचुअलिटीज है सस्पेंशन के लिए, कंटेम्पलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केस, उसके रिगार्डिंग क्वेरी हुई थी साहब, ये पेज नंबर 46 में क्लियर हो गया। हाँ, आपके द्वारा सर्कुलर जो प्रस्तुत किया गया जीडी सर्कुलर है मैडम जी। मैं रीड दैट वन। प्लीज पढ़िए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक
28/1/13 द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा किए जाने हेतु शासन राज्य प्रशासनिक स्तर, संभाग एवं जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया। कतिपय विभागों द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या भ्रष्टाचार आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत होने पर निलंबित किए गए शासकीय सेवकों के मामलों पर भी समिति विचार करेगी। दूसरा है सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 28/1/13 की कंडिका 9(3) में स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 के प्रथम परंतु के अधीन किया गया निलंबन से बहाली के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा। My lord, Annexure P1 is the clear order is that, my lord, in this regard. Page number 17, they are challenging that, my lord. और अभी होता है, ये चार्जशीट फाइल हो गई आपके खिलाफ? चार्जशीट अभी हमें दिया नहीं है, पर इट मस्ट हैव बीन फाइल था। अगर फाइल हो गई तो आपको नोटिस आएगा। नहीं आया अभी तक, कुछ भी चार्जशीट नहीं। 1.5 साल से सस्पेंड पड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्स बुला लेते हैं। पेज नंबर 17 में जो इनका रिजेक्ट किया है, उसमें स्पेसिफिक यही आया था। क्या? पेज नंबर 17 ऑनवर्ड्स पढ़िए। पेज 18 में पैरा 7 से मालूम। श्री ऋषभ जैन निलंबित कार्यपालन मंत्री के अपीली अभ्यावेदन का सूक्ष्म विधि अनुरूप अवलोकन परीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि ऋषभ जैन द्वारा स्वयं शासकीय सेवा के दौरान मध्य प्रदेश सीसीए रूल नियम 3 के उपनियम जो स्पष्ट है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही आचरण नियमों का पालन करेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय है। श्री जैन ने शासकीय सेवा में रहते हुए राशि 3 लाख रुपए की रिश्वत ली। श्री जैन को लोकायुक्त की टीम जबलपुर द्वारा दिनांक 20/7/21 को रंगे हाथों ट्रैप किया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। दिनांक 20/7/22 को राज्य स्तरीय 1 वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उसमें ऋषभ जैन कार्यपालन मंत्री के प्रकरण के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जनवरी 13 एवं 30 सितंबर 15 के अंतर्गत निलंबन अवधि के परिप्रेक्ष्य में निलंबन अवधि का एक वर्ष से अधिक न होने के कारण समीक्षा बैठक में अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। प्रकरण विभागीय जांच में कहते रहे, जब हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे। सर 1 साल हो गया हमारा। अरे 1 साल तो अब हो गया, जिस तारीख को बैठक आयोजित हुई थी उस तारीख को आपका 1 साल नहीं हुआ था। सर उसी साल हो गया। हम 20 काइंडली सी लॉर्डशिप आए सस्पेंशन ऑन 21 से हम कब से सस्पेंशन? 20/7/21 P11। ये तो गलत लिख रहे हैं आपके अपर संचालक। 20/7 को जब बैठक हुई तब तो 1 साल हो गया था इनको। देखिएगा, पिटिशनर इज चैलेंजिंग ऑर्डर डेटेड 24/8/2022 passed by the Health Commissioner cum Secretary, Public Health and Family Welfare Department, as contained in Annexure P1, on the ground that the narration in the impugned order that since petitioner had not completed 1 year of suspension on 20/7/2022 when state level committee was convened in the chairmanship of the additional chief secretary health. Therefore, his case was not considered. It is submitted that petitioner was placed under suspension by order dated, कहाँ है वो order? 33 20/7/2021, and therefore he had completed 1 year of suspension on 19/7/2021. 19/7/22. Therefore, the impugned order is factually incorrect and it suffers from vice of non-application of mind. Full stop. Issue notice. Notice is waived by Shri Manas Mani Verma. Let reply be filed within 2 weeks. List in the week commencing 6 फरवरी 2023. Serial number 28.
स्टे नहीं, स्टे तो हो गया। My lord, we have filed this present petition for issuance of direction to the respondent number 2, who has failed to provide us retirement due even after making several representations. आप किस पद से रिटायर किए? My lord, from deputy director. Deputy director? Deputy registrar, my lord. Deputy registrar, what? Cooperative society. With effect from grievances that petitioner attains age of superannuation from the post of deputy registrar cooperative societies with effect from 31/5/2020. Full stop. No more than 2.5 years time has elapsed, but petitioner's claim for gratuity and leave encashment is still pending and has not been settled by the respondent authorities. Full stop. आपके खिलाफ कोई departmental inquiry तो नहीं? No, my lord, to our knowledge, there is no department that no departmental inquiry is pending against the petitioner. Full stop. Next, in view of such facts, this petition can be disposed of that in case petitioner makes a representation within 10 days from today to the respondent number 1 and 2, then respondent number 1 shall consider and decide the representation through a speaking order. Full stop. If gratuity and leave encashment is payable and not already paid, then same will be paid within 60 days of communication of the order, or if there is any impediment in such payment, then that will be notified within further period of 30 days by the concerned authority to the petitioner. Above terms petition is this. आपका शुभ नाम बताइएगा? अभय केशरवानी। जी, अभय केशरवानी। Serial number 29, Sanjay Kumar Sharma. मतलब पिटिशनर सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ है। मतलब पिटिशनर को बेवजह परेशान किया जाता मतलब विभाग के द्वारा, आयुक्त के द्वारा। किसके द्वारा? आयुक्त के द्वारा। क्या परेशान? 6-7 बार तो विभाग बदल दिए हैं मतलब, लेकिन उनका चार्ज नहीं दिया जाता। 6-7 बार विभाग बदल दिए हैं, उनका चार्ज नहीं दिया जाता। चैम्बर आज तक अलॉट नहीं किया बैठने के लिए। 6-7 माह से सैलरी नहीं मिली। कमिश्नर जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिएगा petitioner's grievances. One of the petition was also pending, my lord. Again, petition एक petition और pending है इनकी, my lord. वो चैम्बर अलॉट करने के लिए थी, my lord. अरे वो हाईकोर्ट चैम्बर अलॉट करता है क्या? नहीं. It's submitted that petitioner is victim of the acts of the Commissioner Jabalpur Municipal Corporation, Jabalpur. He is being harassed consistently. Full stop. He is being continuously reshuffled within no time and is not given charge of any specific work. So also he is not allotted any chamber so that he can sit there and discharge his functions. Full stop. Let reply be filed and issue notice to the respondent number 2. Notice is waived by Shri Jitendra Shrivastava for respondent number 2. Issue notice to respondent number 3 and 4 through through speed post on payment of PF within 3 days, returnable 2 weeks. List in the week commencing. मैन कंटेस्टेड पार्टी तो नालंदा में। ठीक है, आपको कमिश्नर भी तो हैं, आप अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपके नीचे नाक के नीचे क्या हो रहा है कि नहीं। आपको जानकारी लेने में इच्छा नहीं है। लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग 6 फरवरी 2023। Number 30, Ajit Kumar Singh. My lord, in this case, the petitioners are seeking direction to the respondent to account the previous services of the petitioner for the purpose of grant of higher pay school, my lord. And this honorable court has already allowed the petition filed by the one co-employed by Renegade P, page number 85. Previous services rendered as on the and Gramin Vidyut Sahakari Samiti Mandala, my lord. I have order.
पेज नंबर 84 पे लगा my lord. 84 ऑपरेटिव पार्ट है. 84 में लास्ट पैराग्राफ में therefore is issue is advised of the employee cooperative society with the arrest by LMP state. Petitioner is seeking parity with the order dated 20th July 2022, passed in WP 19948 of 2012, which was disposed of by a coordinate bench with direction to the respondents to confer the benefit of higher pay scale upon completion of 9 years and 18 years of service to the petitioner, while counting his length of service from date of his initial appointment with Gramin Vidyut Sehkari Samiti Maryadit सीधी का है ये भी. ये सीधी क्या लेकिन ये मंडला के हैं. आप लोग मंडला के हैं. नोटिस में भी ये सूट में समिति मर्यादित सीधी छोड़ दीजिए. Within a period of 90 days, including all areas. Full stop. Petitioner's counsel submits that his case is squarely covered by the same ratio of said judgment. My lord, if I impact, my lord, in similar cases, this सामने को notice has been issued, my lord. चलिए आप इसको इसी में dispose of कर देते हैं. This petition can be disposed of by observing that respondents will examine the case of the petitioner in the light of the order dated 20 July 2022, passed in WP 19948/2022, and if it is found that petitioner's case is similar, then he be extended the same benefit. Else, his representation be decided through a speaking order within period of 30 days of receipt of the certified copy of the order being passed to him. मतलब इसमें मैंने एक प्रेयर पेंशन की भी की थी तो उसके लिए लिबर्टी देने की petitioner will liberty to file express petition in respect of pension, my lord. Otherwise this order is come in the way. तो पेंशन तो दिया नहीं ना उसमें. पेंशन भी हमने क्लेम किया. देखिएगा, petitioner does not press his relief for pension and submits that he be given liberty to file separate petition if the occasion so arises. 31 Shri Praveen Yadav. My lord, I'm seeking the compensation to appointment. Would this spreadly सोनू जाटव के केस से कवर होता है my lord? सोनू जाटव पिटिशनर के पिताजी डेली वेजर थे और परमानेंट एम्प्लॉय थे. और उनके आश्रित डेली वेजर थे और परमानेंट एम्प्लॉय. परमानेंट क्लासिफाइड थे. यस यस मतलब P4 है पेज नंबर 28. उनके द्वारा 28 पर रिजेक्ट नहीं किया है, इन्फॉर्म किया है कि जो सर्कुलर है 29 सितंबर 2014 का my lord, पेज नंबर 28. मैडम रीडिंग मैडम सेकंड पैरा. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 600 दिनांक 29 सितंबर 2014 की कंटिका 11.1 के अनुसार दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी के कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है, परंतु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त 2 लाख रुपए की राशि अनुकंपा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है. मतलब ये क्लॉज है, ये मतलब ये क्लॉज है, ये 31/8/2016 के द्वारा जो सर्कुलर आया था उसके द्वारा ओमिट कर दिया गया मतलब. और ये सोनू जाटव का डेथ कब हुई? मतलब उनके 12 जनवरी 2021 को मतलब 12 जनवरी 21 को. यस मतलब. देखिएगा, petitioner's contention is that clause of payment of ex gratia of rupees 2 lakhs in lieu of compassionate appointment as contained in GAD circular number C3-12/2013/1/3 Bhopal dated 29 September 2014 bracket में डालिएगा clause 11.1 bracket close has been deleted. Why? मतलब ये सर्कुलर है 31/8/2016 और डिवीजन बेंच के द्वारा मतलब आदेश पारित किया गया 31/8/16 एनेक्चर मतलब रिपोर्टेड है जजमेंट माय लॉर्ड और डिवीजन बेंच के द्वारा आदेश किया गया मतलब आदेश की प्रति है. इतना full stop. Thereafter, coordinate bench has disposed of the petition in the following terms. पेज 30 पर है, कर दीजिएगा, ठीक है ना. This court has not expressed any opinion. Same will be applicable to the fact. Same ratio. Petition is disposed of in above terms. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. Chaliye. Obligation.
प्रवीण यादव madam. Serial number 32. Chaturvedi Sri Amresh Chaturvedi. Petitioner seeking the community, second community judgment of creditors. नजर लगाए P4 में लगाए जिस पर पेज नंबर 18-19 पे P4 से कवर्ड है, पेज नंबर 18-19 से कर दीजिए, दोनों के सेम सिमिलर ऑर्डर करके कितना 18-19 33 में सेम 33 भी सेम है। यस 33 भी कर दीजिए, बंद करके लिखिए। Serial number 34. Nitin Kumar Gupta. Issue notice call for the record. Serial number 30. पोस्टर का नाम डाल दीजिएगा। Serial number 35. Jitendra Singh Chauhan. Without following the procedure, without following the procedure, even collector not issued so far notice and terminate his service with and he preferred also appeal the bill as किस पद पर थे आप? that's what you are sad. Issue notice on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए। Serial number 36. Anil Lala. And I would be appearing for respondent number 2 and 4, madam. I have the instructions to appear in dates, my lord. आपको रोका किसने है? They may be directed to supply me a copy of the petition. अच्छा लिखिएगा। श्री अनिल लाला for the petitioner. आप लेकिन फाइनल हियरिंग में क्यों नहीं आते हैं? मैडम कल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाए थे? परसों भी आपको टाइम दिया था, कल आने के लिए रखा था। हाँ This is not fair. I was stuck, my lord. I was stuck. This is not fair. Some junior should have come here. My lord, I am short of pens right now, my lord, for this week particularly. भिजवा दें आपके पास 5-6 जूनियर, पेमेंट करेंगे आप? Please, sir. I am short of pens. I am in need of pens, my lord. लेकिन उनको फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। करेंगे सर, हम करते हैं पेमेंट। अच्छा, हमें नहीं मालूम करते कि नहीं करते। ये वीडियोस को रख लीजिए, चलिए। अरे सर वो तो हम हो जाएगा सर, हम लोग भी तैयार हैं। ऑर्डर में रेम्युनरेशन भी फिक्स कर दीजिएगा, बाद में विवाद ना हो। श्री अनिल लाला लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, श्री रजनीश गुप्ता फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3, Shri Gupta prays for supply of copy of the writ petition so that he may file his response. Shri Lala is directed to supply a copy of writ petition during the course of the day. Shri Gupta may file his reply within 15 days, listing the week commencing 6 February 2023. Serial number 37. I'm sorry, my lord, if my lord has said it, my lord. ठीक है भाई, हो गई बात, खत्म हो गई, अब उसको कहाँ बढ़ा के रखे जाके? Lordship, in the instant case, the recovery is being made from the retired leaves from the petitioner on the ground of no work, no pay from the period 24/4/2022, 23/6/2022. पद से रिटायर हुए हैं? Your Lordship, quality manager. Issue notice on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. List in the week commencing 27 February 2023. Serial number 38. Lordship, I pray for passover in this case. 38 में? Yes, क्या हो गया? टेंशन है, अपील करनी है। अपीलेबल है मैडम। अपीलेबल ऑर्डर है तो अपील करिए। कोई भी आएगा हम यही ऑर्डर करेंगे। अरे नहीं सर, इसमें नाहिद जान का जजमेंट है। क्या जजमेंट है बताइए ना। कि मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी विल नॉट बी बार। बताइए आप, मेलाफाइड बताइए। दो चीजों में बार नहीं होगी अल्टरनेटिव रेमेडी, या तो मेलाफाइड बताइए या लैक ऑफ अथॉरिटी बताइए। अगर दोनों चीजें हैं तो आपको स्टे देते हैं, नहीं तो अपील करिए जाकर। इसको पासओवर तो करते ही नहीं। पेज नंबर 27 and P5 is there.
इसमें सर जो सस्पेंशन ऑर्डर पास हुआ है वो 2 ग्राउंड्स में पास हुआ है। फर्स्ट ग्राउंड है कि there was minor penalty which was imposed on me and with withholding 2 increments. The charge is that I withdrew, I disbursed those increments. It is in contemplation of departmental inquiry. You have a remedy to file appeal. You file appeal against this order. ठीक है, चलिएगा। Prabhanshu Shukla, after arguing at length, is for withdrawal of this petition with liberty to avail alternative statutory remedy of filing appeal. चलिए। Serial number 39, Jitin Kumar Tiwari. This one. Amit Kumar Tiwari. Petitioner, none for the petitioner. Petitioner's grievances that petitioner's case should be considered for regularization in terms of GAD circular number C-5-2/2018/1/3 dated 5th June 2018. Full stop. Reliance is placed on orders of coordinate bench passed in WP 2555/2022 and WP 3141/2021। ठीक है ना, बस इसको कर दीजिएगा, ये पेज 31 पे दिया हुआ, बस इतना लिखने के बाद में कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन, नहीं लिखा हो तो लिख दीजिएगा। Serial number 40, Shri Rajesh Kumar Pandey. My lord, petitioner is regular employee from the office of the respondent, my lord. He has died during the service, my lord, and making a representation to grant of retirement dues, my lord. Meanwhile, they have paid the leave cash amount, my lord, but had not paid the gratuity amount. My matter is covered on exhibit P6, my lord, page 25. My lord, and contain the representation and exhibit, my lord. आप किस विभाग के कर्मचारी? इसी कॉर्पोरेशन के इसी सीरियल में है जिसमें पिटिशनर था। Petitioner contention is that petitioner is widow of। तो ये मृतक एम्प्लॉय कैसे केस लगाएंगे? मतलब ये पिटिशन नंबर 1 हिज वाइफ। हाँ, जगदीश गिरी गोस्वामी नाउ डिजीज। होता क्या? नहीं तो समझाना पड़ेगा आप जी। ये पिटिशनर कहाँ है? ये पिटिशनर मृतक व्यक्ति पिटिशनर बन सकता है, इतना बता दीजिए हमको। नहीं मतलब सही है आपकी बात, सही है तो इसको विड्रॉ करिए। नहीं मतलब मेगा प्रेयर मतलब हमली प्रेयर वहाँ सर्विस बुक में सर्विस बुक यदि हमें नहीं मालूम, ये फैक्ट्स में आएगा। You are first of all required to show that how a diseased person can file a petition. No, हमने लिखा ना मतलब आपने क्या लिखा है? थ्रू क्या होता है? मरा हुआ व्यक्ति थ्रू कैसे करा सकता है? Under which authority a dead person will file petition through somebody? लिखा थ्रू। अगर आपको बेसिक लॉ नहीं मालूम है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। How a diseased person can file a petition through somebody? No. It will be XYZ widow of diseased person or son of diseased person or daughter of diseased person as the case may be। पूरा कॉस्ट टाइटल गड़बड़ है, आप इसको बदलिए। कर देंगे साहब, आप अभी अमेंड कर दीजिए। देखिएगा प्रेस फॉर amendment of the cost title. Let cost title be corrected during the course of the day. Next, submitted that petitioner's case is squarely covered by order dated 7/2/2014 passed in WP number 12305/2013। ठीक है ना, सेव कर दीजिए। इनको पहले अमेंड करा लीजिए।
Can I take one in serial number 39 presents में भी ना डाल दीजिएगा इनकी वजह से लेटर ऑन करके प्रभात कुमार शुक्ला issue notice on condonation of delay application on payment of PF 7 days 4 weeks call for the report. serial number 42 Shri Shiren Pandey. My lords, the petitioner was on sanctioned leave, my lords. Subsequent to his returning back, my lords, he joined services on the 8th of July 2022, my lords. Still, since that time, my lords, till date, he is regularly working, my lords, with the municipal corporation, but his salary is not being released. Issue notice to the respondents as to why salary of the petitioner is being withheld on payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks. My lords, my only submission would be it can be disposed of, my lords, with the direction to decide my representation. Actually, ऐसा करिएगा. Petitioner's contention is that he is working as किस पद पर काम कर रहे हैं? My lords, assistant encroachment team in charge. Assistant encroachment team in charge. Team in charge. Full stop. Petitioner had proceeded on leave. कब गए थे आप छुट्टी पर? My lords, this was my lords in the month of June and July 2022. In June, July 22, he reported back for work on 24 on 28/7. 28/7/2022. He is continuously working, but his salary is not being disbursed. Full stop. It is submitted that petitioner has made a representation contained in annexure P7. ऊपर जो है ना वो ये जो इंचार्ज जो बता रहे हैं असिस्टेंट उसमें प्यून ऑब्लिक करिएगा प्यून ऑब्लिक फुल स्टॉप P7 full stop. This petition can be disposed of with a direction to respondent number 1 to decide petitioner's representation after taking factual matrix of the case into consideration. If a fresh presentation 15 दिन 60 दिन. serial number I'm obliged, my lord. Shri Dimit Mishra. I'm obliged. My lord, the order passed by respondent number 4, my lord, is without jurisdiction, my lord. I am relying on the coordinate bench order, my lord, relying on the order of this coordinate bench. क्या recovery है? My lord, he was given charge of accountant, my lord, for 3 months, period of 3 months, my lord. And that duration, my lord, there was irregularity in the distribution of water tanker, my lord. So, my lord, as for the concern in the charge, that is also nullified, my lord, because accountant has no role regarding the distribution of water, my lord. And this is the order of the coordinate bench, my lord, relying on the page number. MP order is another P1, my lord, page number 16, my lord. There are 2 charges, my lord. One is the regarding the distribution of water, my lord, and second is regarding the deduction of royalty, my lord. नहीं समझ में आया. Reduction 2 increments with non-cumulative effect by order has inflicted the punishment upon the petitioner directed to recover rupees इतना इतना. कहाँ है वो order आपका बताइए? कौन सा? Impugned order is annexure P1, my lord, page number 16, my lord. किस तारीख का order है ये? ये 11/11/2022 का. A1 से तो चार्जशीट जारी की गई है आपको. मैडम ऑर्डर है, my lord, आदेश वो चार्ज जो है उसी साथ अटैच है, my lord. वो 16 से स्टार्ट है, my lord. हाँ ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या? My lord, they have directly issued the charge sheet and the order has been passed, my lord. No appeal होगी. My lord, without jurisdiction है, my lord. That is. मुख्य नगर पालिका अधिकारी को jurisdiction नहीं है, इतना बता दीजिए. ये मैंने ऑर्डर दिया है, my lord. ऑर्डर से नहीं होता है, नियम से होता है. Yes, my lord. Their appointment is under 94 subsection 4 of the किस पद पर 61, my lord. है आपका? He is the assistant revenue inspector, my lord. Assistant revenue inspector, my lord. Yeah, right. The prime minister. Municipalities Act दीजिएगा. मतलब उस ऑर्डर में वैसे सारी चीजें लेआउट है. अरे भाई ठीक. अगर कोर्ट कानून समझना चाहे तो दिक्कत है क्या? नो. हाई कोर्ट की मुझे भी प्रैक्टिस थोड़ा सा बहुत समझने में उसको समय लगा इस केस को. हाँ नहीं ठीक है. जब आपको समय लगा तो हमें तो डेफिनेटली बहुत समय लगेगा, लेकिन नियम तो बताते जाइए. My lord, 94 subsection 4, my lord. हाँ, subsection 4 पढ़िएगा. My lord.
Appointment of staff, my lord. Every council having an annual income of 5 lakh rupees more shall, subject to rules framed under section 95, appoint a revenue officer or an account officer or may appoint. और कहाँ लिखा है? My lord. आपकी किताब में और लिखा है क्या? मतलब ये जो बाद में ये मेंशन है मालूट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ मालूट सेक्शन 94 के अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ पढ़िएगा, इसका सब सेक्शन 4 है मालूट। वो नो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 मंथ। ये मतलब बाद में चेंज हुआ है कुछ इसमें है। अरे भाई कब से चेंज हुआ है बताइए, तो 2014 से हुआ है। यस मालूट। ये तो आपका तो केस 2014 के बाद का है, तो यही सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन ही पढ़ेंगे ना। मतलब ये 14 के पहले का पढ़ने लगे। मतलब इसमें 19 के ऑर्डर पे। अरे वकील साहब, इसीलिए तो समझना चाहते हैं। 94 का जो ऑर्डर है, सेक्शन है, वो तो आप वो पढ़ेंगे जो कि विच स्टैंड्स ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। 2014 में अमेंड होकर ये प्रोविजन आ गया, एवरी काउंसिल शैल सब्जेक्ट टू रूल्स फ्रेम्ड अंडर इतना। आप अनअमेंडेड प्रोविजन पढ़ रहे हैं जो कि 2014 में बदल चुका है। मैं फिर इसको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, मुझे इसका। हाँ पढ़ लीजिए। Current counsel for the petitioner is not in a position to demonstrate that how impugned order except C1 is without jurisdiction. Full stop. Reading of provision, amended provisions of section 94 reveals that petitioner is placing reliance on unamended provision. Full stop. Petitioner is required to show that how unamended provision will be applicable to the facts and circumstances of the case when amendment was incorporated in the year 2014 in section 94 of the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961. Petitioner will also be required to show that under the new rules, under the provisions of the Act, is the appointing authority and disciplinary authority for a assistant revenue inspector, a post on which petitioner was working when impugned misconduct was carried out. On his request, 2 weeks time is granted to do the needful list after 2 weeks. Number 44, Deven Kumar Tripathi. Well, today I filed an application for withdrawal of writ petition with liberty, my lord, to assail the departmental remedy for revocation and my lord, further remedy, my lord, if occasion arise to file a fresh. Understood है। DK Tripathi, This is my lord for the petitioner heard on IA ले लीजिएगा। (594/23) an application seeking withdrawal of the petition with liberty to pursue departmental remedy and if thereafter any cause of action arises to file a fresh petition. Full stop. This application is not opposed by Shri Manaswani Verma, learned government advocate, and same is allowed in the above terms. Petition is dismissed as withdrawn with liberty to file a departmental appeal, and if petitioner fails to succeed, then to take further action in accordance with. Serial number 45. Shri Pradeep Kumar Kembedi, Girejishwar. Shri Manoj Kumar Rajat.
चार्जशीट की क्वेश्चन कैसे हो जाएगी रिट में? CCL में साउथ ईस्टर्न। नहीं नहीं, वो तो CCL तो ठीक है, ठीक है। Petitioner has filed this writ petition seeking quashing of charge sheet dated 18/11/2021 on the ground that it is absolutely illegal, arbitrary, malafide, and issued by an incompetent authority. Full stop. It is, however, it is not shown that who is the competent authority to issue a charge sheet to the petitioner who was working as pump operator. Full stop. In this regard, no copy of the rules and regulations has been filed by the petitioner to show the competence of the authority responsible for disciplinary action to be taken against a pump operator. Full stop. इसमें बुलाइएगा मिस्टर ग्रीष्म जैन को, रख लीजिएगा जो 2:15 बजे की। हाँ। Number 46, Sri Shailesh Tiwari. The instant petition against the transfer order, my lord. The petitioner has transferred twice in a month, my lord. The earlier transfer order is in excerpt P2, lordship, page number 12 and 13, my lord. The white order dated 8/12/2022, he was transferred from Bora Dehi to Rai Amla district Baitul, my lord. एक सेकंड, आपका नाम किस नंबर पर है? 17 number on last line of the page number 12, my lord. पेज नंबर? Page number अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर बोरा देही टू Rai Amla full time. बैतूल के बैतूल में ट्रांसफर किया गया आपका? जी, बैतूल से बैतूल में ही ट्रांसफर बैतूल में किया गया और 13 तारीख को हमने ज्वाइन कर लिया। There after P3 has been passed, my lord. That is on page number 14, my lord. ये 22/12 को ऑर्डर लॉस, इससे हमें बैतूल से श्योपुर कर दिया। Petitioner's contention is that while order dated 8/12/2022, in which name of the petitioner appears at serial number 17, he was transferred on the post of assistant manager from Board DC bracket में O&M bracket close division Betul within bracket N bracket close within bracket O&M bracket close circle Betul to Raimala RAIAMLA DC within bracket O&M bracket close division Muktai O&M circle Betul, but and petitioner had executed this transfer and submitted his joining on very next day, that is on 9/12 13 not next day, on 13/12/2022, and had joined at transfer place Rai Amla, but arbitrarily by order dated 22/12/2022, petitioner is again transferred from Rai Amla to Business Division O&M Circle Shiopur, which is illegal and arbitrary. Next, issue notice on payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks. In the meantime, as an interim order, it is directed that petitioner shall, that order Annexure P3 shall remain state till the next date of list in the week commencing 6 फरवरी 2023. Serial number 47. My humble prayer for next week, my lord.
आपने रिलीफ मांगा है, अपील डिसाइड करने के लिए कह देते हैं उनको, अपील डिसाइड करने अपील पेंडिंग है। हाँ, उसको फिर डिसाइड करने के लिए कह देते हैं, इसमें नेक्स्ट वीक क्या करेंगे? My office file is misplaced, my lord. अरे तो आपने जो रिलीफ मांगा वो तो फाइल में दिखाई दे रहा है ना, P3 पे आपकी पिटीशन आपके पक्ष में डिसाइड कर रहा है, My lord. ये पेंडिंग है P3। आपका शुभ नाम बताइए? Ashish Kumar Sharma. आशीष कुमार शर्मा फॉर द पिटिशनर। Petitioner has filed this petition seeking a direction to the respondent number 1 to decide petitioner's mercy appeal annexure P3 within period of 30 days. As 2 days time has already lapsed on account of COVID-19 pandemic. Full stop. Next para. This prayer is not opposed by learned penal lawyer Shri Vijay Kumar Shukla, and accordingly it is directed that respondent number 3, if approached with a certified copy of this order, of the order being passed today within 15 days from today, shall decide the mercy appeal if not already decided. Sorry, respondent number 3 is respondent number 1. If not already decided within further period of 60 days under communication to the petitioner, this court has not expressed any opinion on the merits of the case. Chali. Serial number 48, Vijesh Kumar Chaudhary. पे स्केल का मतलब अडेंट का आधार है क्या है? ये सर्कुलर के आधार पर मतलब 7/10/2016 के अनुसार हमें इसके लेबर ये कुशल का वेतन मिलना चाहिए मतलब, जबकि अकुशल का दे रहे हैं। इसमें मेलोड फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से मांग रहे हैं, कुशल का मतलब गणना जो है नियुक्ति दिनांक से ही। इसमें जो क्लॉज 1.6 है सर्कुलर, कंसीडर एंड डिसाइड दी रिप्रेजेंटेशन तो किया है। यस, ये पेज 40 पर जैसा ऑर्डर लगा है वैसे ही ऑर्डर कर दीजिएगा। कंसीडर एंड डिसाइड दी रिप्रेजेंटेशन एनेक्सर देख लीजिएगा कौन सा है। मतलब ये सेम ऑर्डर है आपके, कौन सा दीजिए? 128 भी सेम रिप्रेजेंटेशन P6 P7 है। कर दीजिएगा ये ऑर्डर। 128 भी सेम है, 128 भी सेम कर राजेश 128 तो आपने मेंशन कर रखा है। यस मैडम। चलिए ठीक। Serial number 49, Atul Rai. Lordship, my lord, I am respondent number 2, Lordship. Lordship, I want to seek permission. मैं बता तो दूँ ACR 2006, 7, 8, 9 की लॉर्डशिप हमको डिले कम्युनिकेट की गई थी लॉर्डशिप, जिसकी अपील हमने लॉर्डशिप एनेक्स P1 पेज नंबर 9 to 12 लॉर्डशिप 29/10/2009 को करी थी लॉर्डशिप, स्टिल पेंडिंग। हमारा बस लॉर्डशिप सिंपल ये है कि रिस्पोंडेंट आई वांट टू सीक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? वो डिसाइड करने के लिए बोल देंगे अपील इफ नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड। और लॉर्डशिप ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से है, 1 को डिसाइड हो जाना चाहिए। हां, P4 के अनुसार डिसाइड हो जाना चाहिए। श्री अतुल नेमा लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री विजय कुमार शुक्ला लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, श्री मनजीत सिंह, आई एम सत्येंद्र सिंह लॉर्ड, सत्येंद्र सिंह फॉर रिस्पोंडेंट नंबर एसके सिंह का नाम भी आपसे मेंशन कर दिया है लॉर्डशिप, बिकॉज़ ही इज नहीं ये सब नहीं। सत्येंद्र सिंह फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। नेक्स्ट पैरा, petitioner's grievance is that petitioner has made a representation against late communication of adverse ACRs to the petitioner while annexure P1 which is pending since 29/10/2009. No decision is taken on the said representation, though in terms of GAD circular dated डेट क्या है इसकी डेट है सर लॉर्डशिप किताब का वो लगाया 9 मार्च 1992 लिखा है। 9 March 1992. This representation should have been decided within 1 month, lordship. 1 month. Full stop. Next para. Thus, this petition can be disposed of with a direction to the respondent number 1 that if petitioner's representation against adverse ACRs as contained in annexure P1 is not yet decided, the same be decided within 30 days of receipt of certified copy of the order.
Full stop. It is made clear that if it is already decided, then the decision be communicated to the petitioner forthwith within the aforesaid period of time. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. Certified copy. Certified copy as per rule. Clear number 50, the main Pateria. Leave encashment for Lord, 300 It is a days. matter of encashment or surrender leave for 300 days, my The lord. teacher wala. My lord. Teacher. Very identical, man. कहाँ है वो identical? Sir, this order passed by the honorable. Akshan Srivastava. My representation is P7, my lord. It is pending. P5 is the circular whereby the petitioner is Same order कर दीजिए. One by. Clear number 51. Clear number 51. In this case, I'm praying for next week, sir. Sir, I'm praying for next week. जी. Next week की prayer थी. Shri Virendra Kumar Upadhyay prays for time on his request cases at not list after 2 weeks. Clear number 52. YF Tiwari. Additional is working on the post of assistant teacher, and additional charge for the post of warden has been given to the petitioner for Kasturba Gandhi Girls Hospital. But as per annexer P6 lordship, the impugn order has been passed. As per annexer P6 lordship, the impugn order has been passed on 28/12/2022. By which lordship the charge for the post of warden has been given to the respondent number 6 lordship in my place lordship. Well, my submission is this lordship. Kindly see page number annexer P2 lordship, page number 11. Page number 17 lordship. This is the procedure lordship. Procedure this lordship, when the advertisement would be issued lordship and the applicant would be invited lordship, then the proceeding was initiated and the additional charge would be given to the person lordship. ये लास्ट में देखेंगे पेज नंबर 17 लॉर्डशिप 2.1 चयनित विद्यालय में महिला शिक्षिका की अनुपलब्धता एवं उपलब्ध शिक्षिका सर्कुलर है. आपने बताइए आपका राइट क्या है, क्या इंटरेस्ट है वार्डन बने रहने में? नहीं, राइट हमारा ये है. नहीं, क्या राइट है बताइए. हमारा कोई राइट नहीं है. हमारा कोई 3 साल हुए नहीं हुए आपको, उसमें लिखा है आदेश में कि 3 साल पूर्ण हो जाने के 3 साल हमारे हो गए ना. कोई राइट नहीं है आपका. हमारा ये है लॉर्डशिप जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड बाय द अथॉरिटी लॉर्डशिप एंड द डायरेक्टली. जब कोई राइट होता तब प्रोसीजर देखते, कोई राइट ही नहीं है तिवारी जी. भाई हम भी समझते हैं कि वार्डन बने रहने का क्या इतना इंटरेस्ट रहता है. भाई आपका टर्म पूरा हो गया. आपका सर्कुलर खुद कहता है 3 साल का कार्यकाल. 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया. हमारा ये था कि साहब इसमें जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप किसी को भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. अरे नहीं. और इनके खिलाफ आपका बेसिक इंटरेस्ट ये है कि जब तक प्रोसीजर नहीं हो रहा तब तक आपको कंटिन्यू किया जाए. हमारा यही रिलीफ मांगा है. हमारा तो सर यही है सर. चलिए कोई बात नहीं. क्या करेंगे? इनके खिलाफ कंप्लेंट भी है लॉर्डशिप. तो ठीक है ना, शासन को आप बताइए. फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैज कमिटेड. शासन ने गलत व्यक्ति को अपॉइंट किया है, आप लोकायुक्त में शिकायत कर दीजिए इनकी जांच करने के लिए. ठीक है, अब क्या करना है? इसको विड्रॉ करना है कि मेरिट पे खारिज कराना है? ऑर्डर करना है. लिखिएगा श्री योगेश मोहन तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री पीयूष भटनागर, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, श्री महेश प्रसाद शुक्ला फॉर द केवीएट, रिस्पोंडेंट नंबर 3. Next, this petition is filed being aggrieved of order dated 28/12/2022, annexure P6, passed by District Project Coordinator, District Education Center, Anupur, whereby petitioner who admittedly completed 3 years tenure as a warden of girls hostel has been asked to give charge to the respondent number 3 of the post of warden of the girls hostel
at Kasturba Gandhi Girls School, Pathrodi. Full stop. Next para. Petitioner's contention is twofold. Namely, that firstly, the procedure laid down in circular dated 11/8/2017 is not followed before taking charge from the petitioner. Second ground is that there are allegations of financial irregularity against the respondent number 3. Full stop. Next para. Shri Piyush Bhatnagar submits that since petitioner has already completed his normal period of 3 years, she has no vested right to continue as warden in the said girls hostel. Next para. It is further submitted that it is for the authorities to examine suitability or otherwise of the respondent number 3, and if it is found that there are allegations of financial irregularities and against the respondent number 3, then the state will take appropriate action in this behalf, for which petitioner will be free to make a complaint to the competent authority. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that petitioner has failed to establish his right to continue as warden beyond a period of 3 years. Therefore, consequently, he is not entitled to any relief, and if there is any shortcoming in selection of the respondent number 3, then same can be brought to the notice of the authorities, who shall consider and take a corrective measure if so required. In above terms, petition is disposed of. Bhatnagar ji क्या देख रहे थे? कुछ बताने वाले थे क्या कानून? I was searching that in charge. मिल गया? मैं बता देता हूँ फिर देखो. Serial number 53 is our team. In the year 2010, the cabinet has taken a decision for transferring the police fire services along with the assets and the police the employees to the urban administration department. Lordship. That is annexure P2 is the cabinet decision, and thereafter, Lordship, P3 and P4 are the respective gadget notifications of the departments. Lordship. So, I kindly appreciate annexure P2 is the cabinet decision at page 28, Lordships. विभागीय संक्षेपिका दिनांक 22 मार्च 2010 अनुसार मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम 1999 में परिवर्तन करते हुए आग की रोकथाम का कार्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा जाए। तदनुसार नियमों में संशोधन किया जाए। नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अग्निशमन संचालनालय के गठन है। तत्संबंधी अन्य प्रस्तावित गजट नोटिफिकेशन आ गया फिर। Yes, sir. Now thereafter, Lordship, what happened, Lordship? They were not. The home department was not relieving the persons, and they are not handing over the property. So annexure P6 is one of the judgment, Lordship. That is one of the chief superintendent fire has approved this honorable court at page 55. Yeah, Lordship, he came with a prayer that he should be relieved and he should be permitted to join at urban administration department. This honorable court provided this order dated 19/4/2012. Lordship, the conclusions at page 67. On the basis of the aforesaid analysis, I am unable to hold that the respondents are entitled to hold the petitioner in the home department. More so when petitioner name find place in annexure P1 with a specific remark that petitioner appointed. Yes. I'll reply. कवर्ड है इससे तो। जब ट्रांसफर ही हो गई सेवाएं तो फिर आप कैसे नहीं छोड़ेंगे? सर, और आज भी पुलिस फायर सर्विसेज वाले उस चीजों को छोड़ नहीं रहे हैं और लोगों को रिटेन करके रखे हैं। Piyush Bhatnagar gave notice on behalf of the respondents. Next, petitioner's grievance is that white gazette notification. ऑर्डर भी इम्प्यून ऑर्डर से 2018 का है, 5 साल। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया सर। ठीक है, ठीक है। पहले मैंने एक्सप्लेन किया सर। White gazette notification dated 7th June 2010. And work of prevention of fire has been transferred from home department to urban administration department. First off, the decision was taken to transfer such firefighting staff from home department to urban administration department, but petitioner is yet not relieved. First off, reliance is placed on
order of a coordinate bench in the order dated 19/4/2012 passed by a coordinate bench in WP 16785/2010 against which state had filed writ appeal 854/12 which was dismissed. Next para. Piyush Bhattagar prays for time to file reply. He waives notice for the respondents that reply be filed within 2 weeks. सर इसमें एक चीज ऑर्डर शीट में हो रहा है सर, हुआ क्या था कि हमारा ऑर्डर हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर रिव्यू फाइल की थी कि एक नया नोटिफिकेशन आ गया, तो सर वो नोटिफिकेशन भी मैंने लगाया था, तो वही रिप्लाई है मेरे को फिर ऑर्डर शीट रिप्लाई आ रही नंबर 52 This in the week commencing 13 फरवरी 2023. Record is not clear. Record है नहीं. Let record be called for list along with the record of the claims tribunal. दोनों का नाम लिख लीजिएगा. सीरियल नंबर 55 कुणाल ठाकरे नहीं 17 का मैटर है. अब आपके नाम दिया मिस्टर कुणाल ठाकरे ही नॉट हियर. फिर नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है वकील साहब. 2017 का मैटर है. Kindly pass over, my lord. Senior Tripathi has to argue this matter. पास ओवर होता नहीं है. आप ये चीजें भूल जाइए. पास ओवर वगैरह देखिएगा. His legs before in. ठीक है, let him be. You prepare this case and then argue. Shri Ankur Srivastava submits that arguing counsel Kunal Thakre is not available. Next. Shri Praveen Yadav submits that arguing counsel for the respondent is also not available as he is before another court. Full stop. As nobody is appearing for the as arguing counsel are not available, comma petition is admitted for final hearing. List for final hearing. Can he take up an next week, my lord? आ जाएगा final hearing. Final hearing आती नहीं मतलब. क्या करें? आप लोग करते नहीं इसलिए नहीं आती है. पास ओवर करने मतलब 2:15 बजे रखने मतलब. आप लोग करते नहीं इसलिए नहीं आती है फाइनल हियरिंग. मेरी रिक्वेस्ट आदत डालिए थोड़ा सा प्लीज. मेरी रिक्वेस्ट हुmbly रिक्वेस्ट. ठीक है हो गया. हुmbly रिक्वेस्ट my lord. काइंडली पास ओवर मतलब नंबर कभी नहीं आएगा. नो स्टे. आएगा आएगा. आप बहस करेंगे तब आएगा. इस केस की बात कर रहे हैं. चलिए छोड़िए. It is made clear that as there is no stay, comma, parties will be free to execute the order passed by the London Labour Court Industrial Tribunal. 17B का compliance हो रहा है मालूम. हाँ ठीक है. फाइनली हट कर किसी भी वेडनेसडे थर्सडे को रखते हैं. हुmbly रिक्वेस्ट. चलिए नहीं हो गया, खत्म हो गया. अगला केस. Minor petitioner filed the petition claim for the initial date of appointment, my lord. क्या है, किस पद पर अपॉइंट हुए थे आप? My lord, work charge establishment. कहाँ है अपॉइंटमेंट ऑर्डर? उसमें जो पीपीओ जारी किया गया है तो 1196 से जारी किया है. 1964 का इनका अपॉइंटमेंट. मैं यही समझना चाहता हूँ कि आप जो है कहाँ है आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर? P1 पढ़िएगा. आपकी सर्विस बुक बनी हुई है ये. मतलब पेज नंबर 12 माइनर. पेज नंबर 12 यस. इसमें लेबर कारपेंटर 3rd क्लास. ये कैसे मालूम पड़ेगा? डेली लिखा उसके लिए कारपेंटर डेली वेजेस. कहाँ लिखा है इसमें कि आप वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट हुए थे? डेली वेजेस एम्प्लॉय. डेली वेज नहीं मिलती. वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आप डेली वेजर होते तब फिर आपको मिलता. नियम यही कहता है 1979 का पेंशन रूल्स का. लेबर कोड का ऑर्डर भी माय लॉर्ड इसमें उसमें तो ग्रेजुएटी भी दे दिया. इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से माना भी गया था. कहाँ दे दिया बताइए? पहले P5 माय लॉर्ड. P5 पेज नंबर 21 माय लॉर्ड.
तो आप भी लेबर कोर्ट में गए थे ना? हाँ हाँ फिर क्या दे दिया आपको? फिर यहाँ क्यों आ गए? लेबर कोर्ट ने जब आपको सब डीवाई पेंशन की महिला नहीं मिली मुझे, तो वही वही जारी मांगते किया ना। गया वो 1196 से जारी किया गया। ऐसा होता है क्या? 1196 से आपकी 18 साल की सेवा मानते हुए बीपीओ जारी कर दिया गया जब आप सेवानिवृत्त हुए। 1964 से सेवा कैसे जुड़ेगी? महिला इसमें आया है ये पेज नंबर ये 22 है महिला। पेज नंबर 11 देख लेंगे। पेज 22 पढ़िएगा। हाँ, प्रार्थी द्वारा 32 वर्ष की उपदान राशि प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी द्वारा युक्त अवधि में दैनिक वेतन भोगी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में किया है। पेंशन जो है आपको उसमें नहीं मिल रही है। पेंशन आपको पेंशन रूल्स के अंतर्गत मिल रही है। तो पेंशन रूल्स के अंतर्गत ये बता दीजिए कि आप जो है यह इसको पूर्व सेवा को गणना करने के लिए अधिकारी हैं। पढ़िएगा ऑर्डर P2। तो आया माय लॉर्ड, इनका दिनांक 1/1/96 को वेतन निर्धारण किया जाएगा, परंतु नए दिनांक 1/1/96 से 31/12/97 तक वेतन निर्धारण का कोई भी आर्थिक लाभ भुगतान नहीं किया जाएगा माय लॉर्ड। और वैसे भी ये गलत बोल रहे हैं। 1964 में आपको माना ही नहीं जा सकता है। आइए सर्विस बुक में आपका जन्म है 1952 का। 1964 में आपकी उम्र 12 साल थी। कितना फर्जीवाड़ा करेंगे? आप इतने ही होनहार थे कि 12 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग गई। ये पूरी सर्विस फोरफिट करनी पड़ेगी इस ऑब्जर्वेशन के साथ में कि ये आपने जो है मिसरिप्रेजेंट करके नौकरी प्राप्त करी है। 12 साल की उम्र में कैसे नौकरी लग जाएगी भाई? चतुर्थी जी पिटीशन बनाते वक्त देखा नहीं था आपने शायद ये हमारे लिए छोड़ दिया आपने कि ये बुराई हम अपने सर पर ले। कैंडिडेट लिस्ट आपने नेक्स्ट वीक नहीं कंफर्म कर लेते कि नहीं कंफर्म क्या करना है? सर्विस बुक आपने लगाई है, P1 सामने लिखी हुई है। वो तो लेबर कोर्ट के ऑर्डर में था माय लॉर्ड, इसलिए हाँ तो नहीं ठीक था ना। तो हम भी तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, इसीलिए पूछा। उसमें आपने इसमें सर्विस बुक में भी 1964 लिखा हुआ है पेज 12 पर। 12 साल की उम्र में आप नौकरी में कैसे आ जाएंगे? ठीक है, संतोष करिए, जितना मिल रहा है उससे संतोष करिए। Withdraw. Shri Chaturvedi, when praised for withdrawal of this writ petition, when pointed out that there appears to be manipulation in the records in as much as per annexure P1, date of birth of the petitioner is mentioned as 3rd July 1952. On P1 itself, his date of joining is mentioned as labor carpenter 3rd class 1964, full stop. Even in the order of the labor court dated 20/1/2017 controlling authority under the Payment of Gratuity Act has mentioned initial date of appointment as 1964 without applying itself to the fact situation that a person aged about 12 years was not entitled to any appointment and has passed an order for payment of gratuity. Since that order is not in challenge before this court, therefore, without commenting on the said order, the fact of the matter is that petitioner, having failed to establish that he was employed in a work charge and contingency establishment, is not entitled to any relief for counting of his past services. Praise for withdrawal of the petition. It is dismissed as withdrawn with no further liberty. Serial number 57, LC Chorasiya, 57.1, LC Chorasiya. This petitioner was suspended for in the criminal case was registered. Thereafter, my suspension was revoked. And I have filed the document taken in document record. And पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने लिखा है कि अपराध प्रकरण नहीं लिखा है,
न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निर्णय पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वही प्रोविजन है फंडामेंटल रूल में। वो तो है मतलब पर प्रोविडेंट फंड और प्रोविजनल पेंशन देने का तो राइट है। हाँ हाँ, तो आप रिटायर हो गए क्या? रिटायर हो गए मतलब। अच्छा, पिटिशनर्स ग्रीवेंसेस दैट इसमें क्या मांगा, क्या है आपने? रिलीफ क्या मांगा है? इसमें सर सस्पेंशन को क्वेश्चन का मांगा था और पेज नंबर 8 हमारा रिप्लाई दिया था उसको कंसीडर करने के लिए मांगा। सस्पेंशन तो आपका रिवोक हो गया। सेकंड रिलीफ है मतलब कि जो हमने रिप्लाई दिया उसको कंसीडर किया। तो आपने रिलीफ ही नहीं मांगा, लिख दीजिएगा पिटिशनर्स ग्रीवेंसेस दैट पिटिशनर वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय ऑर्डर डेटेड 22/1/2020 full stop. Petitioner suspension was revoked or the suspension was made on account of registration of a criminal case against the petitioner at police station Baksawa, where FIR was lodged for offence under section 304B 498A 34 IPC and 3/4 of Dowry Prohibition Act, as a result of which petitioner was arrested on 11/1/2020 and was released on bail by the trial court on 14/2/2020. Full stop. It is submitted that petitioner's suspension was revoked on 27th of July. 27th of July 22. Yes. 2022. Thereafter, she was superannuated from service on 31 July 2022. Full stop. Now, petitioner is not seeking quashing of the suspension order or any other relief as claimed in the petition, but restricts his prayer to direct the respondents to consider petitioner's case for release of provisional pension pending outcome of the criminal case. Yes, Provident Fund also. He also prays for release of Provident Fund. Full stop. Next prayer. This prayer is not opposed by the respondent Shri Amit Mishra, respondent counsel Shri Amit Mishra, and therefore this petition can be disposed of with a direction to किस विभाग में थे आप? Health Department. To the respondent number 2 and 3 to consider petitioner's representation for release of provisional pension and amount of provident fund in accordance with law, if petitioner is within some reasonable time. उसके बाद में वो 15 दिन and 60 दिन. The second one. This petition is disposed of. सर सेकंड पिटीशन में सर चार्जशीट चैलेंज की होगा। चार्जशीट तो कुछ होता नहीं, चार्जशीट में तो चैलेंज आपको मालूम है। इंक्वायरी फेस करिए, कंप्लीट करिए, खत्म करें इसको। डिफेंस है हमारा सर, जो भी डिफेंस है वहां जाके बताइए। इसमें सर ये अपने डिवीजन बेंच के जजमेंट है सर, यूनियन ऑफ इंडिया अवधेश मिश्रा वाले। क्या इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि डिफेंस सेम है तो चार्जशीट है नहीं, तो उसका तरीका ये है कि आप इंक्वायरी ऑफिसर को जाके बोलें कि डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरी को डिफर कर दिया जाए जब तक क्रिमिनल केस डिसाइड नहीं हो रहा। आपने कोई ऐसा आवेदन लगाया है क्या? नहीं, अभी नहीं, हमने रिप्लाई दिया, रिप्लाई के बाद जाइए लगाइए फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन with liberty to move an appropriate application before the inquiry officer or disciplinary authority to keep the departmental inquiry in abeyance pending outcome of the criminal case in the light of law laid down by Supreme Court in Paul McCarthy। देख के दे दीजिएगा। भटनागर जी बैठे हैं क्या? चले गए। पॉल मैककार्थी का मैंने लिखाया है, वो जजमेंट लिख के दे दीजिएगा। Petition is disposed of in above terms. Serial number 58. My lord, I am praying for the withdrawal of the step. Shri Bhupendra Kumar Shukla prays for withdrawal of this writ petition. As per his request, petition is dismissed as withdrawn. Serial number 59. Gopal Singh Baghel. Lordship, prayed for withdraw. जी? Prayed for withdraw. Which record? Compassionate appointment है. हाँ. Already appoint हो चुके हैं. तो withdraw करना है petition. लिखिए, आपका शुभ नाम बताइए. प्रिया सिंह बघेल. Miss Priya Singh Baghel submits that relief claimed in this writ petition has been granted by is already granted by the state.
Therefore, she prays for withdrawal of the writ petitions. Same is dismissed as withdrawn. बताइए। सर मैं सचिन गुप्ता सर आ नहीं पाए सर, उनकी तबीयत खराब, मैं जनपद सीईओ हूँ सर, और मेरा ही केस है सर इसमें। सर मेरे साथ सर इसमें पेज नंबर सर आपका सबसे पहले सर ऑनरेबल कोर्ट का संज्ञान लाना चाहूंगा सर। इसमें पेज नंबर सर मुझे पहले सर 90 पेज पे सर, जब मैं था ही नहीं, मैंने ज्वाइन किया था सर 6/8/2018 को सर, और मेरी पोस्ट मतलब मैं रिलीव हो गया था वहां से जून में। लेकिन मुझे उसके पहले के कमिश्नर जैसे अधिकारी सर 2016 में जो काम चालू हुआ सर 2018 में कंप्लीट हो गया अप्रैल में, उसके बावजूद मुझे 3,20,000 की रिकवरी के लिए साथ में मुझसे ये बोला जा रहा कि आपने गलत किया सर। पेज नंबर 90-91 पे सर मैं सर पहले सबसे पहले सर आपका संज्ञान लाना चाह रहा हूँ सर। पहले इनसे तो पूछते हैं इसका क्या हुआ 2-1 के आदेश का कंप्लायंस। इंक्वायरी ऑफिसर अभी नहीं है, इंक्वायरी ऑफिसर नॉट अपॉइंटेड। सर मैं संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने। एक रुक तो जाइए, क्यों नहीं हुआ है सर? वो एक हमने टाइम एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग डिटेल रिप्लाई फाइल की सर। डिटेल रिप्लाई तो फाइल करिएगा, लिखिएगा श्री सचिन गुप्ता लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन पर्सन, श्री मानस मणि वर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट। श्री वर्मा states across the bar that no inquiry officer has been appointed till date to conduct the departmental inquiry as per telephonic instructions received by him Anil Kumar Dwivedi, Joint Commissioner. From Shri Anil Kumar Dwivedi, Joint Commissioner, Joint Commissioner, Joint Commissioner Sagar, full stop. Taking this statement into consideration, comma, it is directed that रिकवरी भी चैलेंज की है क्या आपने इसमें? चार्जशीट को चैलेंज किया सर। चार्जशीट तो चैलेंज किया सर। चार्ज सबमिटेड दैट reply some time be granted to file detailed reply. Let detailed reply be filed within 7 days, failing which the Joint Commissioner Sagar and the Chief Executive Officer Jila Panchayat। चार्जशीट किसने जारी की है? कमिश्नर सर ने। कमिश्नर डिवीजन कमिश्नर। Failing which Divisional Commissioner Revenue Sagar shall remain personally present to answer the queries of this court that why inquiry officer has not been appointed and why inquiry has not made any progress, though charge sheet was issued long back. List on 24 जनवरी 2023। बुला लाइएगा अपने डिविजनल कमिश्नर को। नंबर 61 सुधांशु कुमार सिंह। Petitioner is seeking direction for 7th page के matter. Similar order है अपने पास में। ले लीजिए भाई। अच्छा, petitioner has classified my lord 20/2/2009 my lord। सेम ऑर्डर कर दीजिएगा। इसमें क्लासिफाइड नहीं लिखा है मैंने, क्लासिफाइड भी लिखते हैं मैडम। इसमें लिख दीजिएगा was classified as permanent and is entitled to minimum of the regular pay scale as have been revised from time to time in the light of the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat versus Ashwini Ray। ठीक है ना? State government has already passed the order in P5 my lord। 8 अगस्त 2022। State government has already passed necessary orders as orders dated 1 अगस्त 8 अगस्त 2022 as contained in annexure P5। उसके आपने वो कर दीजिएगा। serial number 62 अरुण सिंह बघेल। for ignoring the default की एक आई है। P9 में डेट नहीं डाली हुई थी तो उसका डिफॉल्ट रेस्टिंग लगा है। ठीक है। हर्ड ऑन आईए कौन सा आईए नंबर है? ये आईए नंबर माय लॉर्ड 58/23 58/2023 फॉर क्योरिंग द डिफॉल्ट
same is allowed. Let default be cured within 7 days. List thereafter. इस my lord वो default is not curable my lord. उसमें restraint default ये लगाते हैं कि उस पर डेट नहीं डली हुई है हम P9 में हमारे और हम इसमें इग्नोर स्पॉट में इग्नोरिंग की जगह इग्नोरिंग दी डिफॉल्ट कर दीजिएगा, 7 दिन हटा दीजिएगा. डिफॉल्ट इज इग्नोर्ड. my lord this case is my lord case is that my lord 18 में my lord TET टीचर एजुकेशन टेस्ट की का एग्जाम नोटिफिकेशन आता है. ऑन दैट my lord petitioner has fill up the form my lord सेलेक्ट हो जाती है और सिलेक्शन के बाद my lord he in counseling my lord his name is appeared in serial number 138 my lord that is P5 पेज नंबर 21. उसके बाद जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की के लिए कॉल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में my lord एक वेरिफिकेशन में ये होता है कि इसने जो प्रोविजनर है उसने 2016 के सेशन में जून में एमए की 4th सेमेस्टर का और सितंबर में बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है. रिजल्ट है दोनों लगाया. इस पॉइंट पे इस हमसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, हम उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं और हम बीएड का के स्कूल के प्रिंसिपल के एचओडी का सर्टिफिकेट लगाते हैं और टीसी लगाते हैं. जो हमसे ये रिक्वायरमेंट मांगते हैं हम उसको देते हैं कि ये सेशन जो है एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम पे हुआ है. और उसके बाद देने के बाद माय लॉर्ड इस पे हमारा वो रिप्लाई आने दीजिए. इशू नोटिस इज वेव्ड बाय श्री शिव कुमार श्रीवास्तव लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट. Reply be filed within 4 weeks. List in the week commencing 20 फरवरी 2023. my lord as an interim is रेस्पॉन्ड नंबर 3 and 4 करना सर. 3 and 4 कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है. अच्छा, इशू नोटिस कर दीजिए. प्रोफेशनल एग्जाम by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. on post में Full stop. नहीं, ये सब नहीं. Petitioner's grievances सुनिए, order सुनिए. Petitioner's grievances that petitioner appeared for teacher eligibility test which was conducted in the year 2018. She was selected. Full stop. She was called for document verification. Full stop. She appeared for document verification and produced her MA mark sheet. MA 4th semester. MA 4th semester mark sheet, which was issued for which exam 4th semester exam was conducted in June 2016, along with B.Ed first semester exam mark sheet dated 17/8/2016. Full stop. For the first semester in the B.Ed mark sheet, exam year is mentioned as 2015-16. Thus, issue is that whether petitioner was entitled to complete 4th semester of MA Hindi Literature, for which exams were conducted in June 2016, and simultaneously pursue B.Ed first semester in the year 2015-16, for which reply is to be sought from the respondent number 3 and 4. 3 and 4, yeah, 3 and 4, full stop. Issue notice to the respondent number 3 and 4 on payment of PF by registered AD post returnable 4 weeks. It is made clear that in case petitioner succeeds, then the last selected candidate may have to vacate the seat for the petitioner. लिस्ट अब इसको बढ़ा दीजिएगा, 20 नहीं आएगा. लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग 13 मार्च 2023. सीरियल नंबर 63 जैसे चार्ज के अगेंस्ट में हमने रिवीजन फाइल किया मैंने जी चार्ज के खिलाफ मैंने 307 नॉट मेट आउट मैन 307 इज नॉट मेट आउट मैन आई एम एडिशनल डॉक्यूमेंट में फाइल किया हूँ FIR मैंने. बताइए क्या है. प्लीज पढ़िए. मैं थाना बीना में सहायक उप के पद पर पदस्थ हूँ. पेज नंबर मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट के पहले पेज में फाइल किया. डॉक्यूमेंट क्या चैलेंज क्या कर रहे हैं आप? चार्जशीट किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हैं? मतलब ये है कि 307 का अपराध इसका नहीं बनता क्योंकि जो अच्छा क्रिमिनल रिवीजन है. सॉरी, हाँ बताइए प्लीज. FIR मैं थाना बीना के सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ. आज रात के
में कस्बा चेक गश्त में रवाना हुआ था। रात कस्बा गश्त व चेक के दौरान पाठक वार्ड बीना में कन्हैयालाल बंसगार तथा उसके लड़के लड़ाई झगड़े से घायल होकर शासकीय अस्पताल बीना आने की सूचना पर शासकीय अस्पताल बीना पहुंचकर आहतगढ़ कन्हैयालाल पिता हल्के बंसगार उम्र 55 साल, राजकुमार पिता कन्हैयालाल बंसगार उम्र 35 साल, रामू पिता कन्हैया बंसगार 27 साल, राजेश पिता कन्हैयालाल बंसगार 22 साल निवासी पाठकवाद बीना की चोट का मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत देहाती नालसी स्वयं अपराध का लेख किया, जो अपराध नंबर पर कायम है। देहाती नालसी की नकल जेल है देहाती नालसी थाना बीना, जिला सागर, अपराध क्रमांक 0 दिनांक समय घटना 6/2/2022 के 3 बजे रात घटना स्थल पाठक वार्ड बीना प्रार्थी के घर के सामने, दिनांक समय सूचना 6/2/2022 के 4 बजे, नाम प्रार्थी कन्हैयालाल पिता हल्के बंसकार उम्र 55 साल केस जारी है। ठीक। सहायक पाठक वार्ड बीना नाम आरोपी बिहारी लाल पिता वृंदावन ताराचंद पिता बिहारी लाल, उमा शंकर पिता बिहारी लाल धानक निवासी पाठक वार्ड बीना स्थान जहाँ सूचना दी गई शासकीय अस्पताल बीना नाम पुलिस अधिकारी साहब ए के मिश्रा थाना बीना विवरण में पाठक वार्ड बीना में रहता हूँ, मजदूरी तथा बाजा बजाने का काम करता हूँ। मेरे लड़के राजकुमार तथा राजेश भोपाल में रहते हैं। मैं पत्नी राजाबाई व महिला लड़का रामू बीना में रहते हैं। रात करीब 10 बजे मैं शादी से बाजा बजाकर घर आया तो लड़का रामू ने बताया कि पड़ोसी बिहारी लाल धानक तथा उसके लड़के से मोबाइल सिम पर विवाद हो गया था। रात करीब 3 बजे लड़का राजकुमार व राजेश भोपाल से घर आया तथा दरवाजा खोलने आवाज लगाया। लड़का रामू दरवाजा खोलने गया तो उसी समय भाई सबसे नीचे लिखा हुआ इसी में एफआईआर में, ताराचंद ने लड़का रामू को जान के मारने की नियत से सर में लाठी मारी। ताराचंद के ऊपर एलिगेशन है लाठी मारने का, और बाकी लोगों के ऊपर है राजेश ने बचाया तो मुझे व मेरे लड़के को सभी ने लाठी व ईंट से मारपीट किया। जी ये फिर इनका मेडिकल जो आया है मेरा, मैंने उसी के जस्ट पीछे कन्हैयालाल का मेडिकल लगाया है, एमएलसी है एमएलसी माइनस, और राजा भाई का और राजेश बंसकार का और रामू का एमएलसी रिपोर्ट भी हमने लगाया है। ये रिपोर्ट नॉर्मल नो फ्रैक्चर 3 माइला, नो फ्रैक्चर से 307 हट जाएगा, वाइटल पार्ट में मारने से आएगा। क्यूरी रिपोर्ट भी है। क्यूरी रिपोर्ट क्या है? क्यूरी रिपोर्ट कह रही है घायल को तत्काल इलाज नहीं मिलता तो उसकी मृत्यु होना संभावित थी। बस रिपोर्ट पहले में है। एक्सरे रिपोर्ट में सिर के आधार पर चोट की प्रकृति साधारण है। हाँ ठीक है, क्यूरी टेंशन मत देगा, क्यूरी रिपोर्ट में इंटेंशन है मारने का, सिर वही मारा है। मैंने वही तो कहा, इंटेंशन देखा जाएगा इसमें। सर पे मार रहे हैं, वाइटल पार्ट पे मार रहे हैं, 307 घटना जजमेंट लाए तो यस दैट इज जजमेंट। क्या है पढ़िए। यस मैडम, इसका मैं रिलेवेंट पैरा है मैडम 5 में नंबर। As per provision of the complainant Mukesh in the subsequent FIR registered on 24/7/2020, Kundan Sharma was armed with a sword. Present applicant Rajesh and Bharat both were armed with stick. Firstly, they abused him by filthy language and instituted him by curse, and thereafter with an intention to kill him. Kundan Sharma gave a blow by the sword on his head. Rajesh gave a blow of stick on the left side of his head, and Bharat gave a blow by stick on his thigh. The incident, High Court of the so-and-so versus State of MP, took place on 24/7/2020 near about at 12 baje, and the victim was medically examined and 2 p.m. by the medical officer who found lacerated would measure 5 centimeter 43 centimeter deep or temper region of the head. Another would measuring 4 centimeter 2 centimeter deep on the parietal temporal region was also found. It is correct that as per the query report given by the surgical specialist of the district hospital, the injury was simple in nature, and as per the opinion of the medical officer, the injury was not survived enough to cause the death of the victim. In the X-ray, no bone injury was found. According to section 307 of the IPC, where does any act with such intention or knowledge to notice to the respondent number 2 on payment of fear
by the registered AD post within 3 days, returnable 4 weeks. List in the week commencing. यहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ेंगे अभी तो उसको कंप्लेनेंट को तो सुन ले. In the week commencing 20 March 2023. Serial number 64, Shri Kapil Sharma. Serial number 64, Shri Kapil Sharma, Sunil Kumar Sharma, Shri Nitin Shukla. क्या है ये? इसमें डायरी नहीं है. None for the revision petition. इसमें डाइन डिक्लेरेशन है, डीडी है इसमें. डायरी है नहीं है? डायरी नहीं है. Shri Pramod Saxena praised for time to call for the case diary. That case diary we called for list in the week commencing 23 January 2023. सर 64 डायरी नहीं है, डायरी बुलाई है. नाम डाल दीजिएगा इनका. Serial number 5, Shri Pushparaj. प्रीवियस डेट में एफएसएल रिपोर्ट बुलाया एफएसएल रिपोर्ट आ गई नहीं. ये क्रिमिनल रिवीजन हमारे पास क्यों आई है? हमारी नॉलेज से हमने बेल एप्लीकेशन यहीं से डिसाइड हुई. अच्छा अच्छा, एफएसएल रिपोर्ट आ गई है. एफएसएल रिपोर्ट कब किस तारीख को प्रस्तुत हुई है? 28/2 लिखा हुआ है इसमें. 28/2/22. 28/2/22. और चार्जेस कब फ्रेम हुई है? तीन 8/22. हाँ, तो उसके पहले तो एफएसएल रिपोर्ट आ गई थी. आपका तो ये तो कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट के बिगर आए हुए इसको चार्ज फ्रेम कर दिया. एफएसएल रिपोर्ट लाएंगे कैसे? तो जिनको भेजा था उन्होंने लिख दिया कि ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो एक्सपायरी डेट का है. एक्सपायरी डेट का है. ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट भी है. इसमें लिखा है द सैंपल रेफर्ड टू अबव इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज डिफाइंड इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर. ये ओपिनियन तो है उनकी पायलट. बाद में बोला कि सैंपल इन द लैब रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी डेट. लेकिन उसमें कोडिन है पायलट. कोडिन फास्फेट एक्सपायरी डेट से तो उसकी सिर्फ तासीर कम हो जाएगी. कोडिन फास्फेट तो है उसमें. दवाई एक्सपायर होने से जी आपको क्या फायदा मिल जाएगा? ओपिनियन भी है जी लेबोरेटरी की. भाई चालान के साथ फाइल नहीं. Sample referred to above is of standard quality as defined in the Drug and Cosmetic Act 1940. चालान में नहीं, चालान सर्टिफिकेट कॉपी चालान से लिए बैठे. चालान की पूरी सर्टिफिकेट कॉपी लिए बैठे हैं. और जब चालान लगा था तब ये बात थी एक्सपायरी डेट निकल चुकी. चालान किस तारीख को पेश हुआ था? एफएसएल रिपोर्ट है ही नहीं उसको. चालान किस तारीख को पेश हुआ था? एक मिनट रुक जाइए. 16/3/22 का ऐसा दिखा है सर. 16/3/22 का फर्स्ट डेट है 16/3/22 जो मेरे पास सर्टिफिकेट कॉपी की ऑर्डर शीट. लेकिन एफएसएल रिपोर्ट तो फरवरी 22 की अगर छूट भी गई ठीक है ना, और न्यायालय के संज्ञान में थी, तो ये आपका जो ग्राउंड है कि बिगर एफएसएल रिपोर्ट के नो चार्ज कुड हैव बीन फ्रेम्ड, वो ग्राउंड तो बनता नहीं. फरवरी 22 की तो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कह दिया कि एक्सपायरी डेट हो गई, इसलिए हम एक्सप्लेन होगी ना सर. नहीं बता सकते. उसमें आगे भी नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने. उन्होंने कहा कि वो जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के उसमें है. ठीक है, इनको दिखाई, पांडे जी को दिखाई है, उसने लिया. पांडे जी का संतोष सबसे जरूरी है. उसमें फाउंड कोडिन फास्फेट 10.99 mg. ट्रायल फेस करो, जल्दी से हो जाएगा. और क्या है. श्री उमेश concerned pays for withdrawal of this criminal revision with full stop. He, however, submits that withdrawal may not prejudice his rights to challenge the veracity and authenticity of the report before the trial. Full stop.
That liberty is always reserved in favor of the petitioner. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn. Serial number 66, Sri Madan Singh, Sri Saurabh Singh Thakur. My lord, praying for Passover. Passover तो नहीं हो पाएगा. Praise for time on his request case is adjourned. List after release. Serial number 67, Kanpur Jansi. My lord, I seek an adjournment. The senior counsel, Mr. Anil Khare, has to argue the matter, and he is on his legs before the court. My lord, Good Jain praise for adjournment. Accordingly, case is adjourned. ये मेरे यहाँ क्यों लगा है इसमें? सर आपने ना लास्ट ऑर्डर शीट में भी यही लिखवाया था, लिस्ट बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच. आप यदि लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे तो उसमें भी खरे साहब उस दिन अपीयर हुए थे और आपको इन्फॉर्म किया था कि ये यहाँ नहीं लगना चाहिए. आपने उसमें ऑर्डर शीट में लिखवाया भी लिस्ट बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच, लेकिन फिर भी सर यहाँ लग गया वो. क्योंकि मेरा तो रोस्टर नहीं है और मैंने इसमें कोई बेल भी नहीं दी है शायद. नहीं सर, बेल का नहीं, 482 है. मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया ना. नहीं आपने कुछ डिसाइड नहीं किया सर. मेरे क्यों लग रहा है बार बार सर? इसका रोस्टर है, उसके यहाँ लगे नहीं. On his request, list this case in the week commencing 9 जनवरी 2023 before appropriate bench. ये आपने ही लिखवाया था सर लास्ट ऑर्डर शीट में. This court is not having jurisdiction to hear 482 petitions. This court has not dealt with any connected matter on the criminal side. Therefore, this is perhaps assigned case. नहीं सर, लास्ट टाइम सर ने चेक किया, वाया भी था रीडर से कि क्या असाइंड है. क्या बोल रहे हैं सर? लास्ट ऑर्डर में अपीयर हुआ था. यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है असाइन. तो क्या लिखा है? सिरपुरकर साहब के यहाँ था. हाँ सर, सिरपुरकर साहब के यहाँ था. उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद ये मैटर शायद कहीं भी एज पर माय नॉलेज असाइन किया. हाँ फिर मेरा कहाँ असाइनमेंट आ गया इसमें? देखिए और आपको कोई ऑर्डर शीट दिखाई दे रही है क्या असाइनमेंट वाली? देखिए उधर एक केस में थी. ठीक है देखिएगा. Case for time case is adjourned. List after 2 weeks. But there's an interim order in 2 of the cases. हाँ, interim order if any to continue. अरे आपकी प्रेजेंस नहीं डाल पाएंगे, आपके नाम पे तो टाइम दे रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं. मैं वहां से एकदम से फ्री हुआ तो मैं दौड़ के आया. Serial number 68. Lordship, I am praying for adjournment because my senior is arguing before another bench. Neeraj Tiwari prays for adjournment. On his request, case is adjourned. List after 2 weeks. Serial number 69. Serial number 69. Pray for Passover. Sundar Pandey. List before another. No, case is prays for time. Case is adjourned. List after 2 weeks. Next week. Serial number 70. Shri Vinay Namdev. None for the petitioner. Case is adjourned. List after 4 weeks. Serial number 71. Shri Basant Raj Pandey. My lord, this is the application under section 439 for cancellation of bail. Notice issue हो गया करना. My lord, I am appearing on behalf of respondent number 2. I have filed reply also. None for the petitioner. पिछली बार कुछ हुआ था ना कि अब इसको ट्रायल की क्या स्टेज थे? My lord, trial charge sheet has been filed. My lord, trial is going on. My lord, this application is based on a liberty granted at the time of bail application. 1 मिनट के लिए आप देख ले मैडम. उनको आने दीजिए. None for the petitioner. Shri Rahul Kumar Tripathi for respondent number 2. Shri Ajay Kumar Tamrakar, learned panel lawyer for state. As nobody is appearing for the petitioner, case is adjourned. Serial number 72. Shri Naresh Chauhan. My lord, this is an appeal under section 30 of the Workmen's Compensation Act.
Actually, I could not prove the employer-employee relationship in the court below. The employer denied that I was his employee because his bus was standing in the thana for about 8 days. So he gave adverse evidence over there. Now, my prayer to this court is that if it can be remanded back, I will get the evidence of the driver who was driving their vehicle at that time. लेकिन फुलफिल करने के लिए थोड़ा रिमांड होता है. Otherwise, the documents relating to the report, they say that I was employed. डॉक्यूमेंट कहाँ बताइए. थाने जो सुधर शेख से 5 तक है. आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा. नहीं, एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह सर क्लीनर्स ड्राइवर्स के लिए कौन देता है सर. कोर्ट ने ये मेंशन किया है पैरा 9 में कि अगर हमने एडिशनल गवाही कराई होती किसी और की जो वहां था. हाँ. फिर इन्होंने ये लिखा है, बस के किसी पैसेंजर अथवा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य में न बुलाए जाने के कारण परिणाम स्वरूप इस प्राधिकरण को यह पाने के परिणाम स्वरूप जॉनसन उनके PW1 ने प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण रूप से सत्य कथन नहीं किए हैं. I would have got an additional evidence over there in the court below. करवाना चाहिए थी वहां से. सर आप रिमांड कर देंगे, मैं करवा. कैसे कर देंगे रिमांड? रिमांड का कोई प्रिंसिपल होता है क्या? लेक्यूना फुलफिल करने के लिए रिमांड किया जा सकता है? कोई लॉ लाए हैं, बता दीजिए. I remember it has been remanded back earlier, but earlier I don't know. Or it may be lifted next week. I'll find out हाँ, तो ये बोलिए judgment and I'll. हाँ लिखिएगा. Learned counsel for the appellant submits that matter be remanded to allow him to fulfill the lacuna of not leading evidence of other persons. However, full stop. However, when Shri Chauhan is asked to show some law that the case can be remanded merely to fulfill the lacuna, he prays for time. On his request, list this case after review. My lord. Serial number 73. Kumar Jha. क्या मैटर है बताइए. Readings complete. reply has been filed by the state. State ने फाइल कर दी. आपने? हमारी तरफ से भी हो गया. None for the petitioner. Pleadings are complete. Petition is admitted for final hearing. It is already it is admitted for final hearing. List in part B of the cause list for final hearing. नाम लिख लीजिएगा. नन करके आप दोनों का नाम लिख लीजिएगा. Serial number 74. Saurav Srivastava. My lord, this is a matter pertaining to termination. जी. My services as Gram Rozgar Sahayak has been terminated. जी. A stigma has been cast upon me, my lords. Where is the order? My lord, the order is on P7, page 32, 29/10/2014. My lord, my first submission is that this क्या order. स्टिग्मा है? पहले स्टिग्मा बताइए. वृत्ति अनियमितता की गई है. ग्राम पंचायत कहुआ के अंतर्गत मजदूरों के भुगतान नहीं होने के संबंध में दिनांक 15/7/14 को कलेक्टर जन सुनवाई में की गई शिकायत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरखाड़ा के पत्र क्रमांक 25/9/14 के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत मनरेगा योजना. एक मिनट रुकिएगा प्लीज. You are also representing the chief executive officer? No, my lord. Chief CEO is I am for 1 and 2 and 4. 1 and 2. तो P10 क्या है? Sir, P10 is the revisional order. Revisional order? अपील करी थी उसके. अपील भी वही आदमी कैसे डिसाइड कर देगा? P7 जो है वो भी महेश चंद्र चौधरी कलेक्टर के द्वारा जारी है और यह भी महेश चंद्र चौधरी कलेक्टर छिंदवाड़ा.
तो P10 तो सर एडिशनल कमिश्नर पेज 44। 44 अच्छा। मतलब इसमें हमारा पहला सबमिशन ये है कि जी। कलेक्टर जो है वो एपीलेट अथॉरिटी है एंड इज नॉट द पर्सन टू पास द ऑर्डर माय लॉर्ड एंड आवर राइट टू अपील हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। माय लॉर्ड इसमें हमने सर्कुलर लगा रखा है P6 में पेज 38 माय लॉर्ड में है। जस्ट अ मिनट। पेज 38 पेज 30 में 30 P6 30 क्या लिखा है पढ़िएगा। माय लॉर्ड जो संशोधन है ये हुआ है 15/10/14 को। इसमें जो खंडिका 17 का पार्ट में पढ़ रही हूँ। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति अथवा कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक की संबंधित सेवा समाप्त किए जाने पर परिवेदन पक्षकार ऐसा आदेश पारित होने के 30 दिवस के अंदर जिला कार्यक्रम समन्वय को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। अपीली अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वय द्वारा उक्त अपील का निराकरण 90 दिवस को अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अपीली अधिकारी समन्वय पुनरीक्षण में भी ऐसी कार्रवाई को लेकर अनियमितता दूर कर सकेंगे। कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वय द्वारा अपील का निराकरण अपने स्तर पे किया जाएगा। My lord, he is the appellate authority and he has passed the order, my lord. This ground we raised in यस क्या कहना है आपका? तो इसमें जो प्रोसीडिंग चल रही थी एनेक्चर P7 that has been initiated मतलब pursuant to a complaint which was in the sometime in जो उनको शो कॉज दिया गया था जी वो 25/9/14 को इंक्वायरी रिपोर्ट है और जो इनके अनियमितता के संबंध में जो कंप्लेंट आई थी वो है 15/7/2014 जी and therefore these proceedings were initiated जी and this circular that is 15/10/2014 जी does not have any retrospective effect मतलब इसमें ये लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव है। ये तो 15/10 के बाद इन्होंने आदेश जारी किया 29/10/14 को अपने कलेक्टर साहब ने। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब ये सर्कुलर आ गया था तो कलेक्टर साहब ने कैसे आदेश पारित कर दिया सर क्योंकि प्रोसीडिंग पहले से चल रही थी। ऐसा है क्या प्रावधान प्रोसीजरल इसमें प्रोसीडिंग पहले से चल रही होगी तो कलेक्टर कैन पास द ऑर्डर्स। सर ये इस जो संशोधन है उसमें ये लिखा हुआ है पेज 31 में उपरोक्तानुसार संशोधन जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। ठीक है तो इसमें क्या लिखा पढ़िएगा। लंबित प्राप्त अपील तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदनों का निराकरण परिषद स्तर से ही स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा किया जाएगा। पहले परिषद के पास अपील जाती थी उसको उन्होंने कलेक्टर को दे दिया लेकिन जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो सीईओ से लेके कलेक्टर में कब वेस्ट की गई ये बताइए। Piyush Bhatnagar, it's time to call for the instructions that how Collector Chindwara was competent to pass impugned order dated 29/10/2014 as contained in Annexure P7 when Madhya Pradesh Rajya Rozgar Guarantee Parishad wide order dated 15/10/14 had already declared program coordinator, that is the collector, to be the appellate authority in the matter of termination of contract employment of Gram Rozgar Sahib. To stop. That instructions be called for within 2 weeks. List in the week commencing 30 January 2023. Serial number 75. I am praying for time to file amended copy of petition. Amendments are already allowed, my lord. देखिएगा petition
Shri Raj Bahuran. Raj Bahuran Singh praised for time to file amended petition. Full stop. Pleadings are complete. My lord, after that, my lord, they have been given opportunity to file additional return. अच्छा देखिए आपने additional return file कर नहीं, अब तो ये amendment let amended petition be brought on record within 7 days. Additional return be filed within further period of 4 weeks. List thereafter. Agree. Serial number 76. Shri Rajendra Saskula. But the case on the last dates, they were granted time to file the right with the IA 13821. File कर दिया आपने reply. My lord, no, reply not been filed. My lord. The case follow the interim order, despite interim order passed by the court, and despite their having allowed him to work, the salary is not being paid since 2017. लिखिएगा let reply to IA 13821 बटे 22 be now positively filed within 7 days. किसको फाइल करना है reply? कहाँ काम कर रहा है ये CD which respondent number 4 chief medical and health officer CD shall remain personally present. List on 25 जनवरी 2023 और उसमें टैली make it in the first week. अच्छा सॉरी हाँ list in the week commencing 6th February 2023. Serial number 77. Serial number 77. Week commencing मत दीजिए फिक्स डेट दीजिए लिस्ट ऑन 8 फरवरी 2023 ठीक है ना बता दीजिएगा उनको. I seek a time model for taking instruction to whether the provision of 17 be complied or not by the manager. Shri Raja Bhaiya Tiwari praised for time to seek instructions whether compliance of section 17B of the Industrial Disputes Act is being made or not. On his request, 2 weeks time is granted. List after 2 weeks. Obliged. Serial number 78. Shri Nitin Kumar Gupta, Shri Vinod Kumar Trivedi. This is appeal for enhancement, madam, and deceased was a tailor, madam, which is already proved, madam. As per para 17 of the award, madam, wrong income has been assessed by the tribunal, madam. Date of accident है 1/5/17, madam. 1/5/17 का एक्सीडेंट है जी 1/5/17 में 9,360 इनकम. दिस इज द कैलकुलेशन. 1/5/17 का एक्सीडेंट है जी और इन्होंने कितनी मानी? इन्होंने 8,000 मानी है जबकि स्किल्ड की है 9,360. टेलर है ये जी 9,185 9,360 सर 1/5/17 जी. So this is the calculation. ठीक है द्विवेदी साहब 8,000 सफिशिएंट कोई एविडेंस नहीं है डॉक्टर. टेलर की कोई एविडेंस है सर. एग्जिबिट सिंगल डॉक्यूमेंट. क्या डॉक्यूमेंट है देखिए. और सर ट्रायल कोर्ट ने माना भी कि टेलर था कुशल श्रमिक है. अरे भाई एग्जिबिट P2 आपके पास में जब इतने फेयर काउंसिल आपको अपोज कर रहे हैं इतना एक्साइट क्यों हो जाते हो आप? कौन सा एग्जिबिट? एग्जिबिट P2 है पैरा 60. सर ये जो येलो वाला बंडल है ये बंडल में क्या रखा है? वो जो सूट और कपड़े बड़े बनाता था ना उसके बिल बुक है. अच्छा ठीक है देखिएगा. और पैरा 17 में माना भी है ट्रायल कोर्ट. बाय द claimants being aggrieved of. दो अपीलें कैसी हैं? सर ये सेकंड केस है वो डेथ केस है उसमें उसकी डॉटर की डेथ हुई. सर को दिखा दीजिए. ठीक है. This appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 10th May. These appeals कर लेते are filed being aggrieved of award dated 10th May 2018 passed by learned 9th Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in claim case number 1101/2017 and claim case number दूसरा क्या है? 1103/17 respectively on account of death of husband of the लखनलाल की डेथ हुई. दोनों अवार्ड अलग अलग. अच्छा दो अलग अलग 1101 एक ही करिए. On account of death of लखनलाल विश्वकर्मा
on a singular ground that accident took place on 1/5/2017 when deceased Lakhanlal was traveling on his motorcycle with his daughter from Sehor to village Pachpipalia. When near Bhagwati Colony, RAK College, a Scorpio coming from wrong side bearing number MP04BA 7607 had hit the motorcycle, causing death of both the riders of the motorcycle. Next para. It is submitted that in this appeal, the only ground to challenge award is that deceased was working as tailor, as is apparent from annexure P2. This fact is admitted by learned claims tribunal. Therefore, wages on the date of the accident should have been computed as per those admissible to a skilled laborer, that is rupees 9,360 per month and not rupees 8,000 as has been calculated by the learned tribunal. Full stop. Next paragraph. Taking these facts into consideration, full stop. Next paragraph. Trivedi opposes and submits that impute award does not call for any interference. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through annexure P2, it is evident that deceased was working as a tailor. Tailor is a skilled job. Therefore, wages are to be accepted at rupees 9,360 per month or rupees 1,12,320 per annum. Full stop. Deceased is survived by कितना deduction किया है? 1/4. 1/4. Is survived by 5 legal heirs. Therefore, 1/4 is to be deducted towards the living expenses of the deceased. Full stop. Age of the deceased has come on record as 49 years. Therefore, 25% is to be added towards the future prospects. And thereafter, multiplier of 13 will be applicable, taking total pecuniary compensation to 13,68,900, over and above which a sum of rupees 70,000 is payable under the head of non-pecuniary compensation and another sum of rupees 80,000 in favor. दो बच्चे हैं 75 years की मदर नहीं 80,000 in favor of 2 children in the light of the law laid down by Supreme Court in Satvinder Kaur. Thus, total compensation will come out to rupees 15,18,900 against a sum of rupees 12,40,000 awarded by learned claims tribunal. Thus, there will be addition to the tune of rupees 2,78,900 to which claimants will be entitled to in addition to the amounts awarded by learned claims tribunal. This additional amount will also earn interest at the rate of 6% on the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions shall remain intact. वो और उठा दीजिए. इसमें क्या है? उसमें 22 साल की थी, नर्स बोला लेकिन प्रूफ नहीं हुआ है और इनकम बोली प्रूफ नहीं दी है, तो उसको अनस्किल्ड से कर दिया 7,125. ठीक है, तो क्या गलत है उसमें? इनकम 6,000 मानी है, नहीं 6,000 मानी, अब ये 7,125 बोल रहे हैं. लिखिएगा ऊपर सब ये अवार्ड क्लेम केस नंबर बदल लीजिएगा 1103/2017. स्टोरी वही रखिएगा. उसके बाद में लिखिएगा that income of the daughter, deceased daughter, who was a spinster, unmarried थी ना? Unmarried is considered at ₹6,000 per month, whereas minimum wages even for an unskilled laborer was to the tune of ₹7,125 per month or ₹85,500 per annum. Full stop. Since deceased was a spinster, 50% is to be reduced towards the living expenses of the deceased, and thereafter 40% is to be added towards future prospects. And when multiplier of 18 is applied,
Total pecuniary compensation will come out to rupees 10,77,300, over and above which 30,000 is payable under the head of non-pecuniary compensation, taking total compensation to rupees 11,07,300 against a sum of rupees 9,37,200. 9,37,200. 30,000 for mother. काय था? 75 years की मदर. कुछ नहीं. Thus there will be addition to the tune of rupees 1,70,100. तो ये सब बाकी सेम कर दीजिएगा नवाब तक. सेकंड वाले में राकेश जैन सबका नाम डाल देंगे. डिस्पोज ऑफ हुआ है तो मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ कि इशू डबल बेंच में भी पेंडिंग में चलो जी कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा 134 लंच के बाद शास्त्र जी 100 कुछ नहीं करेंगे ये तो भगवान मिल सकते हैं वकील साहब वो 10 पे आ मैं फोन नहीं करूंगा मैं यहीं बैठा रहूंगा तो 10 पे आ तो यहाँ सब चलेगा ये अच्छा हाँ ओके नहीं करना ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कुछ चलो बेबन आप चले जाओ या कितनी देर वॉशिंग करेंगे कितना चाहिए आएगा लौट